नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सूरज सिंह, फरीदाबाद, एनसीआर, भारत, इंडिया, SSDR, Bharat. What is SSDR? Again, reminding you, sovereign, socialist, secular, democratic republic, भारत, इंडिया. वो भारत जो प्रभुसत्ता संपन्न है, वो भारत जो समाजवाद को मानता है, वो भारत जो पंथ निरपेक्षता को मानता है, सभी धर्मों को विश्वास करता है, वो भारत जो लोकतांत्रिक है, वो भारत जो गणतांत्रिक है, और वो भारत जो हम सब का भारत है, हम सब से मिलके बनता है. हमारे बिना भारत नहीं, भारत जमीन नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं, जमीन नदी नहीं, नाले नहीं, समुद्र का हिस्सा नहीं. भारत भारत है. पब्लिक भारत की, पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल of this country, having resolved to constitute ourselves into a sovereign, socialist, secular, democratic republic nation, to secure to its people justice, freedom or liberty and equality, so that its people constitute into a body of fraternity, brotherhood, individual honor. And this was declared on 26th November 1949 by our people, and whole this command, this announcement constitutes as we people of this country, question is, are we just born to vote all these criminal politicians in name of democracy, whereas we are different people? Preambles of our constitution mandates. Preamble means a cover to our constitution, a root to our constitution, and where we call that we people of Bharat, India, having solemnly resolved to constitute India, Bharat, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individuals and unity and integrity of nation. And this was announced on 26th day November 1949. We do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. हम भारत के लोग अपनी सत्य निष्ठा से यह फैसला कर चुके हैं कि हम भारत को, इंडिया को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाए, जिससे कि यहाँ के हर नागरिक को हम ये सुरक्षा दे सके, ये गारंटी दे सके हर नागरिक को, उसको जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, न्याय मिले, समाज का, अर्थ का, अर्थशास्त्र का, आर्थिक व्यवस्था का, राजनीति का, उसको स्वतंत्रता हो विचारों की, लिखने बोलने की, विचारों की, विश्वास की, पूजा की पद्धति की, चाहे वो कोई भी हो, बराबरी का, उसके पद का, उसके अवसरों का,
और इन सब की प्रगति करने के लिए, इस सब को ऊपर उठाने के लिए उन सब लोगों में भाईचारा पैदा हो, दोस्ती पैदा हो, हर व्यक्ति का इज्जत मान सम्मान बढ़े और ये देश एक रहे और मिला जुला रहे। और ये घोषणा 26 नवंबर 1949 को की गई और ये हमने स्वयं भारत के लोगों ने इसको स्वीकारा, इसको नियमित किया, अधिनियमित किया और इस संविधान को अपने आप को दिया। संविधान तो हम संविधान कहकर चुप ना करें अपने आप को। We have to understand this constitution. This is not simply a constitution. This is our soul. This is a result of lakhs of sacrifices our forefathers made. They laid their lives, they lost their personal lives, they lost their family lives, they lost everything for sake of those people who would come in future and who we are. They we are. We have to understand that. It's not a book, it's not a text, it's not a statement as I said. It's composition of soul of every citizen of this country. They may call us citizen, they may not call us citizen. They are no one to call us citizen. We are citizens. Political people have no authority to differentiate. We are citizens, not there. They are not our masters, they are our servants, and they have no right to ask for our citizenship. This constitution gives us citizenship. This constitution says you are honor of this country. We people of Bharat, simple. We people of India. It's not given here, we people of Bharat, or we Muslims of Bharat, or we Hindus of Bharat, or we Christians of Bharat, or we Sai of Bharat, or we Sikhs of Bharat. It's not mandating that command. So those leaders whom people have brought to that position of power, they have got some kind of ill drug in them. They are addicted. They are addicted to power. They are not able to digest power. They are not well experienced and pragmatic to understand country. They are not able to understand people. They are not able to understand this constitution. They are not able to understand soul of Bharat. They don't know what is Bharat, what is India, what are people of this country. They are in narcotism of power. We don't need such people. Question is not, I am telling you, this constitution is not biscuit or a cup of coffee. This is more than lives of this country, more than power of people of this country, more than power of judges of this country, more than power of prime minister of this country, more than power of president of this country, more than power of all lawmakers of this country. Lawmakers are not about this. It's more than power of soldiers of this country. It's more than power of wealth of this country. This constitution, preamble and constitution articles are about us. It's like a worship place. It's like a holy book of citizens. You may be whatever religion, doesn't matter. First you are under this. And because you are under this, you are abiding by this, you are citizen of this country. Because of why? You go to another article, that is Article 51A of this Constitution. And my question is, how many of us have been following these fundamental duties? Are leaders of various parties following these duties? We have to raise this question to ourselves and answer ourselves. This is Constitution of India, Constitution of Bharat, Bharat ka Samvidhan. This is a weapon with everybody. This is a flower with everybody. This is a God with everybody. We have to respect this. And those who cannot respect this should not be allowed to stay in this country as citizens of this country. They can be guests, they can be residents, but not citizens if they do not respect this, and in whatever position they may be sitting. It doesn't make a difference. If they respect this, fine. If they don't respect it, they are not citizens of this country. That is simple answer. That is simple documentation. That is simple affidavit. That is simple oath. You have to abide by this Constitution. This Article 51A, fundamental duties. It shall be duty of every citizen of India. It simply says that. It simply says, भारत के हर citizen की
ये कर्म होगा, फर्ज होगा कि इस संविधान को इस तरह से देखे। यहां लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इन ड्यूटी को मानेगा वो सिटीजन ही होगा। और कितने नेता हैं जो जानते हैं इसको, और कितने हम लोग हैं जो समझते हैं इसको। हमने कितनों ने पढ़ा है इसको, और नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, ये गलती सिटीजन की है, भारत नागरिकों की है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप इसको पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपकी धूर्तता है। आप पढ़ेंगे तो समझेंगे भारत क्या है। जिस तरह से आपने प्रियम्बल्स को नहीं समझा, जिस तरह से आपने ड्यूटीज को नहीं समझा, आपने भारत को नहीं समझा। भारत संविधान के आर्टिकल हैं, लेकिन पहले ये है। आप अपना कर्म नहीं जानते, अपनी ड्यूटी नहीं जानते, अपने संविधान के जड़ को नहीं जानते। आप जानते क्या है, और आप जानते हैं तो समझना चाहिए। किसी भी पद पे आप हो, वो इस संविधान ने पहुंचाया है। कोई भी शक्ति आप में हो, ये संविधान ने पहुंचाया है। आप इस देश के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, इस संविधान ने पहुंचाया है। आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या हो, इस संविधान ने पहुंचाया है। आप देश में कुछ भी क्यों ना हो, इस संविधान ने आपको पहुंचाया है। आप आर्मी के जनरल हो गए तो संविधान की वजह से हो गए। आप देश के मिनिस्टर हो गए तो संविधान की वजह से हो गए। आप देश के एमपी हैं, संविधान की वजह से हैं। आप जो भी हैं, बिरला, टाटा, डालमिया हैं, अरबपति, खरबपति हैं, इस संविधान की वजह से हैं, इस देश की जनता की वजह से हैं। ये संविधान देश की जनता ने दिया है और देश को दिया है। किसी भी ताकत नहीं इतनी देश के अंदर के संविधान को हाथ लगा के दिखा दे। जो हाथ लगाएगा इसकी हीट से जल जाएगा। नो पावर एग्जिस्ट इन दिस कंट्री दैट कैन टच दिस कॉन्स्टिट्यूशन, and whoever tries that, this constitution shall burn him, whoever he may be. This cannot be replaced. It's like a religious book, citizen religion book. It is citizen religion book, citizen regal religion, known religion, proven religion. It's not imagination. It is constitution. And country is not imagination. Country is country, nation, Bharat. Jai Bharat it is. जय कॉन्स्टिट्यूशन इट इज, जय संविधान इट इज, जय वंदे मातरम इट इज, एंड जय जनता इट इज। जय संविधान, जय भारत, भारत माता की जय। सब कुछ है इसमें, ढूंढने वाला चाहिए। हर व्यक्ति की आत्मा है इसमें। जो व्यक्तियों ने देश को आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, अपनी जिंदगियां खराब की, अपनी फैमिली खराब की, देश के लिए किया, और वो लोग जो आ रहे हैं और वो जो आ चुके हैं, इस सब में उनका दिमाग बसता है, उनकी आत्मा बसती है, उनकी सोच बसती है। और जो इस चीज को नहीं समझना चाहता वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। वो झूठ पे बैठा है, मक्कारी पे बैठा है, फ्रॉड पे बैठा है, और उसको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। उसके दिल में मैल है, वो कोई भी क्यों ना हो। आप किसी भी धर्म के हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, संविधान को फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी जाति के हो, संविधान को फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी शक्ति क्यों ना हो, संविधान को फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंतर नहीं मानता संविधान, किसी में सबको बराबरी का हिस्सा देता है। हर व्यक्ति का फर्ज इसमें लिखा है। एवरीबडी हैज टू फॉलो इट। लिखिए, टू abide by constitution. It shall be duty of every citizen of India. हर भारत के नागरिक का ये फर्ज है, ड्यूटी है, कर्म है, धर्म है। ड्यूटी धर्म भी होती है। To abide by constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem. भारत के हर नागरिक को इस संविधान को मानना होगा, इस संविधान के हिसाब से चलना होगा, इसका मान करना होगा, और देश के जो भी आइडियल्स हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, जो भी रहे आगे बढ़ने के लिए, जो भी हमारे सिद्धांत हैं उनको मानना होगा, संस्थाओं को मानना होगा, राष्ट्रीय ध्वज को मानना होगा, राष्ट्रीय गान को मानना होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो यही आपका प्रूफ है। आपको टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स, वो नोबल आइडियाज जिसके स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया गया, जिनका फॉलो किया गया, उसको मानना होगा, अपनी आत्मा में बसाना होगा। राष्ट्रीय स्ट्रगल में जिन्होंने काम किया उनको देखना होगा। To cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom. स्वतंत्रता बच्चों का खेल नहीं थी। इस सड़क पे चलते चलते आपने पैसा दिया और खरीद ली। खरीदारी से स्वतंत्रता नहीं मिली है। We have to sacrifice people. We have to sacrifice leaders and citizens of this country. We did not buy it. We won it. We pulled it from people. It's not simply a game
It wasn't simple, we can say, chess game or cricket game. It was game of struggle, game of life and death. Land on which sitting is India. It was not just given to us in gift. It was, after long struggle, achieved, and it cannot be destroyed like certain political leaders. Than to uphold and protect sovereignty, unity and dignity of India. आपको रखना होगा सर उठा के, आपको बचाना होगा, रक्षा करनी होगी इस देश की प्रभुसत्ता संपन्नता की, इस देश की एकता की, इस देश की इकट्ठा रहने की, एक फार्मूले की, प्रिंसिपल की, कह सकते हैं इंटीग्रिटी की। इस देश को एक रखना आपकी ड्यूटी है। आपको अड़खड़ा हुआ नहीं रखोगे तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। टू डिफेंड कंट्री and render national service when called upon to do so. आपको देश की रक्षा करनी होगी, आपको राष्ट्रीय सेवा देनी होगी, जब जरूरत पड़ेगी मांगा जाएगा तो देनी होगी। वैसे फौजी हैं, फौजी कर रहे हैं इस काम को, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो आप देश के नहीं हो सकते। To provide harmony and spirit of brotherhood among all people of India. To provide harmony and spirit of brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to dignity of women. आपको एकता रखनी होगी, हर समाज की, हर वर्ग की, सभी लोगों में भाईचारे की आत्मा को डालना होगा। ये नहीं देखना होगा कौन किस धर्म का है, मजहब का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस भाषा का है, कौन किस क्षेत्र का है और कौन किस समाज का है। ये नहीं देखना होगा। और आपको महिला वर्ग की इज्जत को खराब नहीं करने का हक है, आपको उसकी वैल्यू देनी होगी। To value and preserve rich heritage of our culture, जो भी हमारी संस्कृति की वैल्यूज हैं, मानक हैं, उनकी ऊंचाइयों को बना के रखना होगा। अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को समझना होगा। पुरानी संस्कृति कितने भी पुरानी क्यों ना हो, जो भी जानी मानी है उसको संभालना होगा। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ and to have compassion for living creatures. आपको रक्षा करनी होगी वातावरण की जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें बसा है फॉरेस्ट भी, जंगल भी, झीलें, नदियां, जंगली जानवर, जंगली लाइफ, और सबके लिए आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। जो भी जी रहे हैं इस देश में, हर कोई, चाहे वो पशु पक्षी भी क्यों ना हो, मानव तो है। To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. आपको विज्ञान के साथ चलना होगा, विज्ञान का विकास करना होगा, मानवता के साथ चलना होगा और ढूंढना होगा कि और आपकी कैसे आत्मा को बढ़ाया जाए, सुधार कैसे किए जाए, देश की आत्मा कैसे बरकरार रखी जाए, ये आपको करना होगा। अंधविश्वासों से दूर जाना होगा। मतलब ये है, जब साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात होती है, रिफॉर्म की बात होती है, तो आपको तंत्र मंत्र यंत्र से दूर जाना होगा, अंधविश्वास से दूर जाना होगा। जो बात सही लगती है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल न्याय संगत है, व तर्क संगत है, तर्क संगत बात के साथ चलना होगा, और उसे विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। कहानियों पे नहीं जाना होगा, वास्तविकता पे जाना होगा। बाबाओं की बात में ना आके वैज्ञानिक की बात में आना होगा, नेताओं की बात में आके कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्श्योर वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति को बचा के रखना, उसकी रक्षा करना, उसको सही रखना आपका कर्तव्य है। अहिंसा को रोकना, हिंसा को चलने देना, हिंसा को रोकना आपका कर्तव्य है। हिंसा की कोई जगह नहीं संविधान में। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को और साथ दूसरों के अपनी पूर्ण वैल्यूज को, अपनी पूर्ण मेहनत से आगे बढ़ के एक्सेलेंट बनना होगा, पार
एक्सेलेंट विशेषज्ञता पूरी हासिल करनी होगी, आगे से आगे बढ़ना होगा हर क्षेत्र में जो बढ़ सकता है, पार एक्सेलेंस जिसे कहते हैं, जिससे कि भारत देश नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस इन हायर लेवल। हमारा देश बिना रुके ऊंचाइयों को चलता रहे, छूता रहे और प्रयत्न करता रहे उनको प्राप्त करने के लिए। और बच्चों की पढ़ाई 6 से 14 वर्ष की आप कोई भी क्यों ना हो, माता पिता हो, गार्डन हो, कि आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चा आपका पढ़े, बिना पढ़े ना रह जाए। ये हर व्यक्ति की ड्यूटी है। मिनिमम ड्यूटी ये डिफाइन की गई है और मैक्सिमम तो आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने ऊंचे आप कहलाएंगे। मत भूलना, वी पीपल ऑफ भारत है, इसमें न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, इकोनॉमिक न्याय की व्यवस्था है, पॉलिटिकल न्याय की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज से है, उस समाज में सभी लोग हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आप जिसको छोटा समझे आपकी मर्जी, वो आपका एक वैल्यू होनी चाहिए, एक डेटम लाइन होनी चाहिए कि आप किस हिसाब से छोटा कह रहे हैं। एक आदमी पैसे से छोटा होता है, कोई पैसा नहीं है उसके पास। एक आदमी बहुत रईस है, उससे कहता है मैं बड़ा हो गया। एक आदमी कहता है मेरे पास डिग्री है, मैं बड़ा हो गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं, छोटा हो गया। ये सब नहीं चलेगा। सोसाइटी को इंसाफ देने के लिए उसको एक ऐसे स्तर पे लाना होगा, उस स्तर से जहां अपने आप को सब संभाल सकें, चाहे कोई छोटे से छोटा रहा हो, किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो। ये पब्लिक की ड्यूटी है। पब्लिक की ड्यूटी का मतलब इस देश की ड्यूटी है कि उसको एक डेटम तक लाए, एक लाइन तक लाए, जहां से वो आगे अपने आप चल सके। उसे ही सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे ही समाजवाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को समाज के स्तर पर लाया जाए। पैसा उसको चाहे सरकार दे या कहीं से भी आए, इससे सवाल नहीं है। ये कर्तव्य पब्लिक का है, देश का है, और वो सामाजिक न्याय ही कहलाता है। जब आपको समाज के एक स्तर पर ले आए, उस गिरे हुए स्तर से उठा के उसको स्तर पर ले आए। इकोनॉमिक जस्टिस वो क्या है? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। कुछ ही लोग अगर अर्थव्यवस्था को पकड़ के बैठ जाएं तो अपने चलाएंगे। हमें देश ऐसा नहीं बनाना है संविधान के हिसाब से। इकोनॉमिक जस्टिस भी लोगों को देनी है। सामाजिक जस्टिस तो हमने दे रहे हैं कि हम उनकी जात पात से उन्हें नीचा नहीं समझेंगे, उनके धर्म से उसको नीचा नहीं समझेंगे। सब धर्म बराबर है, सब जात बराबर है, सब सोच बराबर है। उनको भी हमें अर्थव्यवस्था में हिस्सा देना होगा। अगर हम हिस्सा नहीं देंगे तो ये बराबरी नहीं है, ये न्याय नहीं है। हमारे देश में बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत आप कह सकते हैं सब कुछ है, सहूलियत है, फैसिलिटीज हैं। We have to give them their right, their due. As in social structure, we are growing them up, we are allowing them, this constitution allows them to come to a certain level from where everybody is considered, and then they move according to their capacity, consistency to compete with all equals, so that a level playing field is created. Same thing applies to economic. Wealth cannot be concentrated by few people. This country, wealth is for all. Resources are for all. Nation is for all. It's not few percent of people who are saying we are billionaires and trillionaires. No, you are not. This trillionaire you are, this billionaire you are because of public of this country, because of wealth of this country. So this wealth must be shared by each and every citizen of this country, and that is called economic justice. And you go to political justice, that is very critical and super critical political issue here. Political justice is not a joke. It's written here, political justice. We are not getting political justice. Only political leaders are getting political justice. As citizen of this country, which is in dispute, but I am not in dispute. I am citizen without even having any paper, because I was born in this country. By virtue of being born in this country, automatically I get citizenship. That's it. No one is there to ask me, you are not citizen. No one has authority as such. And those who are talking like this, they are living in doldrum, they are living in dark age. Political justice, I should get, you should get. Political justice means you should have right to reach parliament. You should have right to reach presidency. You should have right to become whatever you want to become in political system. But is that happening? That's a question. आपको क्या राजनीतिक इंसाफ मिल रहा है? राजनीतिक न्याय मिल रहा है? ये प्रश्न उठता है।
मैं नहीं समझता कि मिल रहा है राजनीतिक न्याय, बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक छोटे से छोटे लेवल का व्यक्ति क्या एमपी बन सकता है? कागजों में तो बन सकता है, थ्योरी में बन सकता है, लेकिन अगर आप स्थल पर जाएं तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है जो फ्रॉड सिस्टम है, जो मैनिपुलेटेड सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, और बल्कि कहना चाहिए राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीतिक दल ने ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, ऐसा बैरिकेड क्रिएट कर दिया है कि उसके बिना आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन मेरा प्यारा संविधान तो ये नहीं कहता, ये तो कहता है जस्टिस मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल भी। The political justice means I should be able to go to parliament without any problem, but I am not reaching, you are not reaching. Now how can I reach? And this means I have to be a member of a political party, and that also influential member. I must have a capacity to buy ticket from that political party. That's fact of life. You cannot deny that. This number two, number bribery, or you can say whatever is it, you donate to party, you have to pay money to party to buy party ticket for contesting election, and even after that, there's no guarantee that you can become president, you can become a member of parliament. There's no guarantee as such, because you can lose election. Losing election means you can lose your investment. Even if you have money, you cannot become MP. Means you have to touch feet of political party. I have to touch feet of voters of political parties. That's the question. Why to touch feet of anybody, howsoever? Question is, you have to work for people. So justice to individual citizen in relation to political system has failed to reach common people. It is reaching only to political leaders who were born in political families or who have access to political parties with full power. Only those people can become politicians in this country. A common man like me, like you, from very common ground, can never even dream to be MP of this country, because people shall not vote that person. Even if you contest, nobody shall vote you, because you do not come from a political background. So, out of these three justices which I'm talking about, social justice, economic justice, political justice, where do we stand? I think in all these three, we stand nowhere. Social justice, it has not been given to common man. Still there are people who are scheduled caste, scheduled tribe, economical backward, and all other poor people. It includes all. Poor are getting poorer and richer are getting richer. Then where is economical and social justice? If you have money, you can do business. If you have money, bank gives you money. If you are having power, you can get money and you can earn money. But you have nothing, you just educate yourself and search for a job forever. Then come out of employment and again join something else and keep struggling like this forever till you die. And where is social justice? Question arises. How can somebody be trillionaire and how can somebody be poor? Question is, somebody has no food and somebody has everything in life. Somebody has everything to enjoy. Then there's a disparity among society. Yes, there is. There's disparity in economy. Yes, there is. This means here constitution has failed. This means politics has failed. Because political leaders did not make any plan, did not chart out anything to resolve this. Development means development should reach lowest section of society, because that section has also right on development, has right on our resources, has right on our powerful positions. If a poorest man cannot reach parliament, I don't think any purpose is served by parliament. And parliament is just for those people who are in politics. That is not acceptable. That is not written here. This constitution doesn't mandate that only those people in political standard, political sector, they can reach only there. Why a rickshawala
Why a person on lowest status can reach these powers without having political background? This means our system is corrupted. We corrupted our system. People in power corrupted their system. They did not think of people in the masses. They just thought for themselves. We have to continue in politics forever. And either you come one time, I come second time, you come third time, I come fourth time, you come fifth time, I come. It's moving on like that. And those who elect them, they are also doing something. They are not understanding anything else. People of this country are not politicians. Only few are politicians. But people are not getting anything. Political posts can be given to political posts only. That's not law. That's not constitution. Our posts are free for citizens of this country. But that's not happened. That has not happened. So we have to analyze this. You're all students. You are scholars. You're educated people. You are highly educated people. You may be doctors. You may be engineers. You may be professors. You may be professionals. And you may be ordinary. It's duty of every citizen, not so-called citizen, every citizen, a citizen by birth, a citizen who is a voter card holder, a citizen who is having passport, a citizen who has every right to call citizen. No need of any further documentation. Citizen means citizen. Passport you are having, it calls you citizen, mandates you are citizen. Voter card mandates you are citizen. It is in public demand, public acceptance. What government says, I'm not concerned with that. A voter card cannot be allowed to non-citizen. That is anti-national activity if you do that. Because by voter card, you are electing your MP. And a foreigner cannot elect MP. A non-citizen cannot elect MP. Every baby, new baby, welcome in this country at time of birth is citizen of this country. A citizen of this country. And if people intrude from borders, infiltrate, that's duty of government and security forces to check it. We cannot differentiate on the basis of race of people, on religion of people, or on status of people, whether you're considered citizen or you're not considered citizens. Citizen means society. Citizenship of this country means society of this country, and society means social justice. Everybody must have access to be elected to political system, and if it's not allowed virtually, there's a failure on this part. We have to take that into our consideration. People are educated, youth are educated, they have ambitions in life, they have energies in themselves. Those energies and ambitions cannot be thrown away, cannot be thrashed, must be concentrated into something new. And those people can bring changes to virtually inefficient system, fake system. Fake is because political means you have to vote as well as you have to be elected. Both are there. As a voter, you have certain responsibility that I just said in fundamental duties. You have duty as a voter in this country, as citizen of this country. Citizen is clearly written there. They may say voter card is not applicable for citizenship evidence. No, that's wrong. Voter card is a voter card. It's your electing authority, a license to you to vote. You're licensed voter. You're licensed citizen. I don't care what court would say. This is my personal, individual interpretation or construction of these provisions in Constitution, of these commands in Constitution. I should say command, because this is an order. Order by public to every citizen. We have to take it high spirit, not a low spirit. We have to resume it high spirits. Politics is not a joke in this country, but it has been made a joke. Worst thing somebody understands these days, politics, politician. Dirtiest name in this country is now considered politician or politics. But politics is on justice, social, economic, and political.
So it's linked to justice, not to legal justice, original justice, pure justice. It's linked to justice in lines, in coordination, culmination, in connection with social, economic, and then politics. It should be taken on highest cadre. We have to concentrate on how to make it possible for everybody to become politicians. It's same thing as people who have devoted themselves, to nation, who have devoted themselves to nation, and this means to Rastra, Bharat Rastra. Bharat Rastra it is. Don't leave every issue to politicians, because it is not politicians that are going to decide your future. It's yourself. It's you. जन गण मन अधिनायक जयो हे भारत भाग्य विधाता. Jan, man, gan. Who are these? Jan means public, simple. Bharat bhagya vidhata adhinayak jayo hai. Jan gan man adhinayak jayo hai. Adhinayak means deputy leader. Nayak, leader. Who are deputy and who are nayak? You are leader, being citizen of this country. आप इस देश के नेता हैं क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, और जिनको आप चुन के भेजते हैं वो आपके अधिनायक हैं, वो आपके अटॉर्नी हैं, वो आपकी सेवा करने जाएंगे सभाओं में, लोकसभा में या विधानसभा में जाके वो आपकी तरफ से काम करेंगे. जन गण मन अधिनायक जयो हे, भारत भाग्य विधाता. और हम जो नायक हैं, वोटर एक नायक है, मताधिकारी एक नायक है. वो नायक अपना मत देता है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, चाहे वो प्रतिनिधि एमएलए बन के जाए, चाहे वो सांसद बन के जाए. चुन के तो नागरिक ने भेजना है, वोटर ने भेजना है. It is duty of voter to send our lawmakers to houses, various houses of this country, about 550 member of parliaments and around 5,000 member of legislative assemblies. It is people of this country who constitute them, who attorney them, who authorize them, who empower them to work on behalf of citizens. So, leaders are people. Leaders are people, not these political leaders. They are deputy leaders. Our MPs are deputy leaders, our MLAs are deputy leaders, and our executive is also deputy leader. We are leaders of this country. We all voters of this country are leaders. Our citizens of this country are leaders. We have to take into our mind and keep fresh in our mind. We have to keep ready in our mind that this is what we expect, and we take into our understanding. Because we cannot take we cannot take constitution for granted. No way. You cannot avoid this constitution. This constitution has to move along with you. This constitution has to lead you. This constitution has to give you direction. This constitution has to tell you who you are and what you have to do. That is what it is. संविधान है ये, बच्चों का खेल नहीं है. ये कोई किताब या शतरंज का मोहरा नहीं है. ये भारत का संविधान है. आपकी आत्मा समझ आए या ना आए, आपको भगवान समझ आए या ना आए, आप कुछ भी समझ आए या ना आए, धर्म समझ आए या ना आए, लेकिन संविधान को समझना बहुत जरूरी है भारत के लोगों को. आप संविधान नहीं समझेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी. आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके डिप्टी क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे क्योंकि आप संविधान को नहीं जानते. आपको समझ आएगा कि आप इन्हीं को अपना भगवान समझते हैं, इन्हीं नेताओं को अपना मास्टर समझते हैं और आप उनके गुलाम बन जाते हैं. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. Public is not slave of these leaders. In fact, public is leader unto itself. Public is leader. Every citizen of this country, every voter of this country,
Every person responsible in this country, every person who has some work in this country, who has some responsibility in this country, who abide by constitution, that person is leader. And these people are deputy leaders. They are not our leaders, we are their leaders because we are sending them for something. They are going to work there on our behalf, for us, for this nation, because we constitute nation. We have to understand this point. Socio-economic, political is first requirement. Because if there is no society, you are nothing. If there is no economy, you cannot take food. You cannot have food. If there is no political system, which you are, not these political people are. You are feeder of this system. You are charger of this system. You are initiator of this system. You are facilitator of this system. You are operator of this system. You are auditor of this system. You can name anything. You as voter, you as citizen of this country are there on this system. You cannot understand otherwise. There is no one in this country who can tell you are not citizen of this country. No one is there. It's all fake talks. Prove your citizen. No, we are not going to prove what you do. We are citizens. There's no need of proving. You prove that you are leaders. We elected you and we know that you are elected. It's not you to say you are elected. We voted to you, that's why you're elected. Who voted to you then? If we elected you, who voted to you? We voted to you. And we are leaders, we are honors, we are responsible for this country. On what basis you are saying that you prove it? You have taken vote. From whom? From dogs, from cats, from people of this country, from voters of this country, from citizens of this country. You are saying prove it. You are a bluff master. Who are you? You are bluffing. You don't respect spirit. You don't respect soul of this country, people of this country. You are violating in your talks, in your statements, constitution of this country. First, who are you? Question is that you were elected by people. And it's people have to ask, not you. You are servant to people. You cannot go defying people. You have to listen to people. And if you don't listen, people will listen to you very well. They will teach you very well. They will show your place exactly where you are. They brought to you power. They brought to you these positions of Lok Sabha and Rajya Sabha and executive. You are nowhere. You are not well educated. You are not qualified for that. People consider you qualified and accessed you, reached you to these positions. Do you understand that? So justice of social, economic, political is very complicated, very analytical, must be understood in that spirit, that way. If you cannot provide social structure, efficient social structure, efficient economical structure, efficient political structure, you are not working as deputy of this country. You can be removed from your seats because you have failed this country, you have failed public of this country. What is society today? We know. You have taken so much power from this constitution illegally that you are arresting people without any crime they offend, they commit. This is happening. Who is responsible for it? आप किसी को भी उठा के पकड़ लेंगे, सड़क पे चलते को आप पकड़ लेंगे, एक देखा टोपी लगा रहा है पकड़ लो, सलवार कमीज पहनी है पकड़ लो, किसी की ड्रेस देखी है पकड़ लो. हमारा संविधान ये नहीं कहता. भारत का संविधान ये नहीं कहता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डजंट मैंडेट दैट. आप किसी को पकड़ लीजिए, आपके बाप का राज है, आपका राज है. संविधान तो गया भाड़ में, संविधान को तो कोई पूछता नहीं है. फेंक दो उसको. जो संविधान को फेंकेगा, जो संविधान का मान सम्मान खराब करेगा, अपनी कब्र खोदेगा. याद रख लेना. ये संविधान है, बच्चों का खेल नहीं है. ये गिल्ली डंडे का गेम नहीं है, ये क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है. ये भारत का संविधान है. 140 करोड़ लोगों का विश्वास है,
140 करोड़ लोगों का अधिकार है। 140 आज की तारीख में जो है उनकी शक्ति है। कोई आपको संविधान फेंकने नहीं देगा, बल्कि आपके जो भक्त हैं वो भी संविधान फेंकने नहीं देंगे। आप ट्राई करके देख तो लीजिए। और आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप संविधान को हाथ लगा सकें, क्योंकि आप जानते हैं संविधान में कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होता है संविधान के अंदर। आप जानते हैं, शायद नहीं जानते तो जान लेना, थर्मामीटर लाना और टेस्ट कर लेना। इससे पहले कि आपको अग्नि हो जाए, आपको आंच लग जाए, आपको इंतसम लग जाए, उसको पहले चेक कर लेना। Do not take people for granted. Do not take public for granted. You have no right to arrest whosoever you want to arrest without any commitment of crime. You can arrest anyone. No cognized crime. You are arresting people. You are sending them threatening notices. You can do whatever you want to do. But don't forget, time is not same all times. There is change in curve. If today you are in position, tomorrow you are in no position. Remember, no one is powerful in this world to tease public, to suppress and oppress public, and whoever does that shall be oppression subject, shall be eliminated from political system. It's not a warning, it's advice as well as warning both. As citizen of this country, every right I enjoy to speak like this, because I am talking on behalf of public as an individual. Public may respect me or may not respect me, but thoughts would respect, provisions will respect, constitutional respect. To an extent, I am talking about constitution. I am talking about social justice, economic justice, and political justice. No one can touch me, because it's for system. It's for system. It's for our system, for national system. It's not for some other country. Yes, there is always difference of opinion, we agree. Always there's difference of opinion. Public is half public this side, half public this side, or 80% this side and 20% this side. This happens. This is agreeable. Everybody can speak anything. No one can be forced to accept anything. But we cannot go against the Constitution. You cannot go against Constitution, not only legally but also morally, because you had undertaken oath of protection, comply with this Constitution. Where is that oath? There can be long talks and long discussions on these issues, but I'm just talking in brief so that we can express our mind. We can express to public our mind, which is more important, because public is always not very serious. Public is serious for a few moments, then it forgets. It's natural. Then we come on to equality of status and opportunities. Equality of status and opportunity. बराबरी पद की, हैसियत की और अवसरों की। हम कुछ भी कहते रहें, किसी से समझते रहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता देता है, हमारा संविधान बराबरी देता है। हमारा संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। स्वतंत्रता है आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की, वो लिख के हो या बोल के हो या समझा के हो। बिलीफ की, आप क्या सोचते हैं, किस में विश्वास रखते हैं। फेथ की, आप अपने भगवान को, अपने विश्वास को कैसे चलाना चाहते हैं। और वर्शिप की, आप किसकी पूजा पाठ करना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता है सबको। कोई इस बात को लेके बहस नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोई भी बहस करेंगे, बहस भी आपकी संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। आप किसी के विश्वास को तोड़ नहीं सकते, आप किसी की पूजा करने की रीति को खराब नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट इंटरफेयर इन लाइफ, what one thinks, how he thinks, what way he thinks, what he writes, what he speaks, what something like this, what type of faith one is having, what type of expressions is having, what type of
You can say contemplation somebody has for anything. Or how one worships, where he goes to temple or mosque or where else goes. It's that choice. We have to take it this broad spectrum. Liberty can be enjoyed only when you are socially strong, you are economically strong, and you are politically active. Politically active doesn't mean that you should go for election. Beyond election is also politics. And there's the strengthening of society, strengthening of groups, strengthening of individual, that's all part of politics. Politics is not simply political system. Politics is how do you behave in a country under law. That's politics. If I am not a politician, I'm not interested in elections, I'm not contesting, I never contested, and I don't capture this because I have no money and I want to serve people politically. It doesn't mean you must go to House of Parliament or House of Assemblies. It doesn't mean that. You can educate people, you can teach them or you can learn from them. And then you can watch their activities, you can find problems there, you have to solve their problems. That's what is required. That's what is required, nothing else. Then say equality of status and opportunity. आपको पद में किसी और बात में बराबर रखना होगा सबको, नहीं रखेंगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अवसर आपको देने होंगे, कैपेबिलिटी के ऊपर देने होंगे, या कोई आपका अपना नया प्लान है आपके अपने लिए तो वो अलग बात है। जहाँ तक देश की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। To an extent, resources are concerned, wealth is concerned, our property is concerned, our thoughts are concerned, everything wants to relax. But relaxing is not easy. Sorry. We have to consider all these points of justice, liberty, equality, opportunity, etc. That is very important. This clearly says that you are a free citizen, you have free thought, you are free to work, you are free to make your economy, and you are free to go to political system. But it is easy to say that. You are not actually availing that capacity. Why can't you avail? We know it. But right answer is we have to understand this provision very well. Because last line says we enacted it. We adopted it, we enacted it, we approved it, this system, and we handed this over to us ourselves. This is what this says. Adopt, hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So this document is for us, by us. Of course, they will support us, but ultimately support is something else. Approval is on yours. So I should say in that way, not otherwise. Well, we'll go further. That one, so big talk can be conducted on this issue. मैं बहुत बातें कर सकता हूँ उसके बारे में, और मैं इतनी बातें भी नहीं करना चाहता कि आपको सोचना ज़्यादा पड़े, आपका समय ज़्यादा लगे, कुछ भी हो। आज की तारीख में ये बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो देश के अंदर चल रहा है, दिसंबर 2019 में आशा नहीं करते थे लोग कि ऐसा भी होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये तो हमारा मीना भी हमारा वो भी नहीं बता सकता जो हमारा नेता बना हुआ है, जो अपने को नेता कहता है। आपको ऐसे एमपीओ को चुनना पड़ेगा, आपको ऐसे एमपीओ को चुनना पड़ेगा कि उस देश के संविधान को समझ सकें, इस देश को मान सकें और इस देश को संभाल सकें। देश को संभालना तो आपको है, क्योंकि हर आदमी हर जगह नहीं हो सकता।
I have to say to all youth, be serious in studies and examination, and also be serious in sales or side. All right. So we have gone through our preamble and fundamental duties, and that is very important for everybody to understand. To understand what I'm saying is, it's always a problem. My mouse, it jumps too much. भारत माता की हम बात करते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम रसे सुजलम सुफलम मल्लजा शीतलम, सुजलम सुफलम मल्लजा शीतलम, सस्यै श्यामलम मातरम, शुभ ज्योत्सनाम पुलिकल यामिनीम, फुल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम, सुहासिनी सुंदर भाषिणीम, सुखद वंदना प्रदा मातरम, वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कलकल निनाद कराले, ददी सप्तकोटि सुजे धरत खरखर वाले, के बोले माँ तुम्ही अम्बले, बहुबल धारणिम नमामि धारणिम, रिपुदल धारणिम मातरम, वंदे मातरम। इट्स इन शॉर्ट, आप जानते हैं इसका मतलब, सारा गाने का कोई फायदा नहीं है, कोई गाता भी नहीं है, सिंपल है। मदर आई सल्यूट thee, rich with thy urine streams, bright with our-shared gleams, cool with thy winds of delight, green fields waving, mother of might, mother free, glory of moonlight dreams, over thy branches and lovely streams, clad in thy blossoming trees, mother given of ease। जिंदगी मेरी आसान बनाती हो वंदे मातरम करके माता, laughing low and sweet mother I kiss the feet, वंदे मातरम। मेरी उस बुझी जिंदगी को जिंदा करती हो, खाने को देती हो, अच्छा दूध देती हो, अच्छा पानी देती हो, अच्छा फल देती हो, हवा देती हो, सब कुछ देती हो, जमीन से अर्थ में से पैसा देती हो, वेल्थ देती हो, फल प्राप्त होते हैं, खाना प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, दिन होता है, रात होती है, जिंदगी चलाती हो। ये सारी बातें तो है, यही तो वंदे है, यही मातरम है। इसके बिना फल नहीं होगा तो खाएंगे क्या, दूध नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ, खाना खाना है, रोटी खानी है, रोटी कपड़ा और मकान जमीन से ही आता है, कोई हवा से नहीं निकाला जाता। हवा जमीन की पैदावार में काम करती है, सूरज की रोशनी काम करती है, आसमान काम करता है, लोगों की मेहनत काम करती है, खून पसीना काम करता है, तब जाके आदमी को रोटी मिल पाती है, कपड़ा मिल पाता है, मकान मिल पाता है, वो रह पाता है, नहीं तो वो रह नहीं सकेगा, कुछ नहीं होगा तो। इसलिए हमको कोई चीज मजाक में नहीं लेनी चाहिए, हमें बहुत सीरियस होना है। We have to be too serious to understand all these requirements. You cannot simply take it for granted. Oh, it's Vande Mataram. No, you have to understand Vande Mataram first. Only then you can value it. It's not simply saying something. It's not the same song. It's a mental statement. The statement that you are having, that statement that you worked with, a statement that got you independence, freedom from others. We cannot take it just we are taking it. हम देश को भी उसी तरह से नहीं ले सकते, देश कोई मजाक नहीं है।
देश कोई ड्रामा का नाटक नहीं है। देश सारी जनता की जिंदगी का सवाल है। देश एक गंभीर बात करने का विषय है। देश खेल में नहीं बिताया जा सकता। देश को मजाक नहीं बनाया जा सकता। देश में जो भी है सबका है। आप ड्रामा नहीं कर रहे, यहाँ पे सर्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ जिंदगियों का हिसाब कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ आज की तारीख में 140 करोड़ जो भी हैं, ये देश उन लोगों की जिंदगी बनाने का है, उन लोगों को आगे ले जाने का है। जनता अपने आप से, अपने संविधान से भारत में चुनती है लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए, ताकि आपके नाम पे वहां जाएं, आपके क्षेत्र के वो सांसद कहलाएं और आपके वो प्रतिनिधि कहलाएं। और आपको अधिकार है कि सरकार इसको उन प्रतिनिधियों ने बनाया, अपने आप तो वो भी नहीं बनी, प्रतिनिधियों को बनाया गया और प्रतिनिधियों ने सरकार को बनाया। तो सरकार सरकार की तरह रहे तो अच्छा रहता है। वो सरकार अपने आप को सरकार कई ऊपर बैठ जाए तो फिर समझ लीजिए देश का टाइम ठीक नहीं चल रहा। We have to think this is country for everybody. It's not one man's country. It's not one family country. This country belongs to all people of this country. We cannot talk all time Hindu, Muslim, Sikh, Isai, no meaning. If somebody is Hindu, it's because his Hindu status or he likes it. If somebody is Muslim, it is because his status likes it. We leave all this behind. And we have to say we are Bharatvasi. हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं। ये सोच जब आपके अंदर बस जाए, ये सोच जब जन्म ले ले आपकी, तो आप एक स्वयं देश के नेता बन जाते हैं। आप एक संख बन जाते हैं, एक शक्ति बन जाते हैं इस देश के लिए, क्योंकि आपकी मंजिल देश की एकता है, आपकी मंजिल देश की शक्ति है। आपकी मंजिल अपने देश की शक्ति होने का मतलब अपनी शक्ति। आप लोगों पे नहीं छोड़ सकते, आप राजनीति वालों पे नहीं छोड़ सकते। आप क्या चाहते हैं? आप बेवकूफ बनते रहे और बनाते रहे, तो वो बेवकूफ भी नहीं बन रहे, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, जितनी मर्जी कोई पब्लिक भड़का ले, पब्लिक आप भड़का जरूर सकते हैं लेकिन पब्लिक को समझा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है। आप अपने कुछ फायदे के लिए पब्लिक भड़का दीजिए, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि पार्टीज तो पार्टीज ही होती हैं, देश नहीं होता। देश तो देश की जनता होती है, जिसकी पार्टी नहीं होती। सब इनडायरेक्टली जानते थे चुनाव से पहले कि मोदी क्या है, फिर भी लोगों ने उसका अवसर दिया। आज अपने आप को भगवान कहता रहे, लोग उसको भगवान कहता रहे, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। सच तो ये है कि एक जिम्मेदारी की पोस्ट होती है, वो जिम्मेदारी अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो ना आप भगवान में हैं ना आप इंसान में हैं, आप है ही नहीं। सच तो ये है आप एक मूर्ख हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है। जिसको प्रॉब्लम ना समझ आए, जिस लोगों को प्रॉब्लम ही समझ ना आए, जब प्रॉब्लम ही नहीं समझ आएगी तो उसका क्या हल निकालेंगे? If people who cannot understand your problem, they have no way to chart out solution. If you cannot understand, cannot analyze these issues, you cannot find solution for them. This is very clear. You may be whatever position you are having, it doesn't make a difference. If you are not able to understand that problem, you are just sitting for sake of sitting in Lok Sabha or Rajya Sabha. That is not adequate here. We had constitution, we have constitution, we had before, but now it's our constitution. It's not British constitution. It's by our people. It's for people. People have to think, have to contemplate. Unfortunately, what's happening in this country now, in December 2019, which is going to lapse now to January 2020,
We have in fact ablaze our nation, ablaze our society. How it has been ablaze, that is a question of investigation, but nation is rising. That is true. I am not concerned what people, government thinking, what they think about. They are doing their job, they have to do that job. But if they play with job, that's not acceptable. That's not acceptable. I have a home, that's my Bharat. I am a member of this country, that's my fortune. I was born in this country, that's a fact of life. And no one can ask me this question. No one got any right to respond. I should respond on that question. No, I won't. This database of all people in this country, those who are educated and those who are having middle age, those are database, and other people also database. Every day you cannot update database, but one day it has to be. So one day or 2 days you can use this. You update your knowledge. You may say, why I am talking all this? Yes, I am talking all this because this is required. It's required in a way at this stage when country is moving in a direction which is in darkness, which is a fake direction. We have to check it. It's responsibility each of us. It's responsibility of each of us to understand what we are. We cannot take things for granted. No way. We have to understand our logic. We have to understand our limit. That's important. Whatever we call, whatever we understand, we are educated society. If not all, majority of people, or even you may say minority of people, are educated. We are, you can say, youth in this country. We are old in this country, and country comprises of all ages. We are women, men, children, boys, girls, old veterans, professionals, all. Truly speaking, we are a wealthy country. Truly speaking. If you weigh ourselves from all aspects where consideration must be extended to, we have to evaluate ourselves in a different way. Just think, America is not more than 20 to 25 crores. They are not more than that. And I think we have educated people more than this. Then where we are lower? Where are we lower? We have just caused ourselves inferiority in ourselves, nothing else. If you see whole world now, what's happening in world? Whole world is on, you can say, is on some base of revolution. If you go from one corner to other corner, there is change everywhere. If change is not taking place now, it shall happen soon. Or there having change demand everywhere. Change is life. Change doesn't mean physical change. Change doesn't mean chemical change. Change means change, sustainable change. Sustainability. Sustainability may be confused to someone. What is sustainability? We call sustainability of development, sustainability of changes. Sustainable means today we have to accept something, and that something must move tomorrow also, the day after tomorrow also, so that it applies in a similar way to coming generation. If we are using something, we should not finish that. We should leave it to for future people. Means we must develop some formula so that we cannot extinguish wealth of nature, guaranteed by nature. No other way out. अगर आप सोचते हैं आप सब खा जाएं जो भी दिया है भगवान ने आपको,
आज ही हम पी जाते हैं सारा, कल क्या पता क्या होगा। आप सस्टेनेबिलिटी नहीं चाहते, आप सब कुछ आज खा जाएंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन क्या खाएगी, ये भी सोचने का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है सोचने का। हम पढ़े लिखे हैं कहते हैं, हम बहुत बड़ा देश है कहते हैं, सच बात है हम बहुत बड़ा देश है, हम बहुत बड़ा देश है पर बहुत गरीब नहीं। एक समय था कि गरीबी भी थी, बहुत नीचे गरीबी थी, हम उसको गरीबी कहते हैं, लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, बहुत ऊंची चीज थी वो उस टाइम। आज हमें कोई फैसला करना है, हमें यह फैसला करना है कि हमें जाना कहाँ है। आज जनता में एक ऐसी धारा बह गई है, बहा दी गई है लहर, जिसने जनता को सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं दे रहा। मनों के अंदर क्या बोलते हैं, दुश्मनी पैदा करने के अलावा, जलन पैदा करने के अलावा, गिलानी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं दे रहा। आज का युवा गुमराह हो गया है कुछ हद तक, और जो गुमराह हो गए थे वो कुछ हद तक वापस भी आ रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आके आपका दिमाग खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आके कह दे कि मैं ही सब कुछ हूं तो आप क्या करेंगे? सोचने का विषय है। राजनीति इतना भी बड़ा सब्जेक्ट नहीं, इतनी भी बड़ी शक्ति नहीं कि देश की जनता को बदल दे। राजनीतिक में क्या इतनी शक्ति होती है? मैं नहीं समझता। राजनीति देश की पब्लिक की सेवा करने का नाम है, राजनीति देश को तंग करने का नाम नहीं है। राजनीति लोगों में, नागरिकों में डर बैठाने का काम नहीं करना चाहिए। राजनीति एक रास्ता दिखाती है पब्लिक को किधर जाना है, और वो भी पब्लिक से पूछ के। राजनीति का मतलब यह है फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। राजनीति का मतलब होता है सच क्या है और झूठ क्या है, सामने क्या है और गुप्त क्या है। राजनीति का मतलब होता है आप अपने धन को किस तरह ले जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। राजनीति का मतलब होता है देश की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। राजनीति का मतलब होता है अपने समाज को कैसे सही कराया जाए। राजनीति के मतलब बहुत होते हैं, अगर कोई समझे तो, नहीं तो कुछ भी कह लो, मैं जो कह रहा हूं वो मानना होगा आपको। वो राजनीति नहीं है, उसे राजनीति किसी भी मूल्यांक में नहीं कहा जा सकता। जब देश के नागरिकों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, जब देश को दबाने की कोशिश की जाए, पढ़े लिखों को पढ़ लिखा ना समझा जाए, उस टाइम देश क्या करेगा, जनता क्या करेगा? जो करेगा सोच समझ के करेगा, और सोच समझ के नहीं करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तो क्या करेगा आप सोच लीजिए। I am just trying to tell all of you, do not waste your time in name of political leaders, whoever they are. I don't want to take names of those people, because those people are responsible to current burning state of this country. Particularly those people who are youth. Youth element is very responsible for future of this country. Youth are energetic. They must have patience. They must have mind to absorb, and they must find research useful for them. They should not say, I am political. I am political. You are political, that's right. You are political. But not political businessman.
I accept politicians who serve this country, who think affirmatively for public, who think for future of public, who think for republic of this country, who think sovereignty of this country, who believe in secular status of this country, who believe in socialist of this country. We always talk of democracy only. We always talk of democracy and republic. On even passport they are saying Republic of Bharat, Republic of India, Bharat Ganatantra or Ganarajya. Where are other points not given in passport? Should be given in passport. Whole world should know what is our status. For example, one time Libya used to write SPLJ. Remember? Maybe those who are old may remember. SPLJ. They are writing full name of their country, SPLJ. Socialist Peoples, Libya, Republic Nation. Well, my answer to my question is we are SSSDR Bharat India. We are not only DR, just like Congo is a country, says DR Congo. I was once confused, what is this DR? Or it was Dr. Congo. No, it was not Dr. Congo. It was Democratic Republic Congo. So what we are? We are SSSDR, but you shall not find on any document SSSDR. Means something has been concealed, something has been not taught to us. If not taught to us, we have to learn ourselves. I'm not speaking against that, I am speaking some fact. And that fact is we are SSSDR. That is our full character, full identification, full potential and name. Bharat is not alone we are. We are SSSDR. I'll explain to you all that. हम कौन हैं? Who we are? We are sovereign people. We should say we are sovereign people. We are socialist people. We are secular people. We are democratic people. We are republic people. We are Bharat people. This is our name. Sovereign. My rule, my rule, my rule. I am sovereign. It is my country, my rule. I am socialist. Society has to benefit from this nation, whole society. It's not few people. All society who belong to this country. SSSDR Bharat. Samajwad. Everybody must have food. Everybody must have clothes. Everyone must have housing. Everybody must have medicine, must have health, must have care. That is what socialism is all about. You cannot leave somebody on road if he doesn't have wealth. You cannot leave somebody to die. If what is it? Power? No one can be arrested without commitment of an offense. But you are arresting. You are torturing people. You are causing atrocities on people. You are causing injustice to people. Then it's called socialism. Socialism dies. Then we go on to it. We have talked of sovereign status. We are not slaves of someone. We are sovereign. And we know what we are in economy. Socialism we have known. Economy. I am very big. You are very small. Take some money and go. I'll go. I will not go. I am country faith. I have faith in this country. I cannot go anywhere. This soldier shall go.
this guy shall go. We say like that. Well, we have to move further. Then we are saying we are secular. This word is little difficult to digest with by all. We have big society. 1400 million people we have. There is a small group in this. You may say a small impurity in this. You may call it impurity. Or in science we say no, there should be no foreign material in this, When you study engineering, you say, oh, this material should have this property. There should be no foreign element in this. We have certain element, in fact, which is foreign by their thoughts. Foreign by their thoughts. They are not original thinker of this nation. They are not thinker of this nation because they migrated from somewhere else. Their blood may be different, their soul may be different. They are here as citizens, but they do not consider themselves citizens. They consider themselves super citizens. No one is super citizen because Constitution says equal status. Simply it says social justice, equal status. Economical justice, equal status. Political justice, equal status. Freedom, equal status. Equality, equal status. And opportunity, equal status. And membership of this country is equal status. Everybody is member of this country who is citizen of this country. Secularism, what does it mean? It's not defined anywhere in Constitution, and we don't want that definition. Sometimes I was also confused long back. There should be some definition. Sometimes if something is not defined, you are free to decide. That is your privilege, a special right. Sometimes something defined which confines something, which controls something is not always good. Because secularism is not material, it's not a substance, it's not an item, it's not an article that can be purchased, it's not an area that can be defined. It's a value, it's a moral, it's a character, it's a height of understanding, it's a height that we have to know, can we reach there? Secularism, we should not compare to what other nations state for that. Our secularism is acceptance of all people in this country. All, whoever they are, whoever we received, whom we digested for centuries and millenniums, all respectable people, all honorable members of this country. I'm not calling honorable members of Lok Sabha, honorable members of this country, from 0-day born to 100-day born or oldest one, most senior veteran one. All are welcome, all are honors, all are accepted by this land, by this society, by this integrity. They are not only accepted, they are empowered. They are integrated, they are unified, and we all constitute one unit of this country as people of this country. This unit may increase in population, this may decrease in population, but unit is there. And that unit is ownership of this country, that unit is family of this country. Secularism means do not speak against someone's or anyone's rituals, culture, way of thinking, or whatever way one wants to live spiritually.
by soul, by contemplation, by faith, by understanding of religion or without understanding of religion. If one doesn't believe in God, it doesn't matter to me. And if one believes in God, it also doesn't matter to me as citizen of this country. Why should I speak against someone's religion? Why should I point out someone's ritual? Why I should hesitate to talk to some people of other religion? Or why should I say, oh, you are other religion, you do not belong to this country? That is not allowed in secular volume, secular strength, secular measurement, secular supervision, secular honor, secular dignity, secular management, and top of all, secular governance. Those who cannot understand secularism and do not admit it, do not value it, do not accept it, those people are not accepted in this land. If they are accepted, they're accepted provided they accept SSSDR Bharat. It is people of this country who accepted this, who enacted this, and who are forcefully applying this. You cannot go against Constitution mandate. If you go forever. If you are here, you are welcome as honor of this country, provided you accept this Constitution. That is prime condition, an exclusive condition, and no condition can override this condition. No court can go beyond this boundary, beyond this red line. No one can cross it. If someone can cross it, people shall cross it. That is all. If you cannot respect my nation, my constitution, you do not respect me. It is too simple. You may be highest powerful in this land, but constitution higher than you. You may be king of this land, constitution higher than you. You may be CGI, you may be POI, you may be PM, you may be M, you may be MP, you may be whatsoever you are. National Constitution, Bharat Constitution, SSSDR Constitution always stands higher than you are. We are designer of this Constitution. We struggled for this Constitution. We laid lakhs and lakhs of lives for this Constitution. Our forefathers lost their blood, their lives, their comforts for this Constitution. We struggled for decades and decades and decades to push out some people from this country who forcefully had entered our country and abused us for centuries. We removed them. It was not a game over. We had to work again, and we wrote for us, for ourselves, this Constitution, which was never available before. This Constitution cannot be taken for granted. This is not simply a document. This is soul of all. Remember, this is soul for all. And who talk something else, they are enemies of this nation. Who talk other than Constitution of this country, they are enemies of this country. They cannot speak against Constitution if they live in this country. Whoever they are, you have to, when living in this country, abide by Constitution. It is our law. It is our supreme law. It is a nation. It is a decision of public. It is a mandate of public. No one can go against this. And if somebody tries,
that person shall fall into sea. If you speak against Constitution, we are not a country that can be forced by someone to change this Constitution. This point must be clearly understood by each and every citizen of this country, each and every political person of this country, each and every religious person of this country, each and every caste person of this country, each and every businessman of this country, each and every investor of this country, and everyone else and others who are left with. They include in. We have to be serious on this issue. We have to be very serious in interpreting and analyzing this issue. If we cannot do that, we of course would miss a lot. It's not alone my country, and it's not alone your country, or you are not a member here alone. It's a collective body of people called Bharat, India, and that is to be accepted by each and every unit or citizen or member of community in this country. Till now, people took it easily. People took Constitution laughingly. Laughing. I talked to many people in my life, many young and old and all, certainly raising certain questions, just to apprise myself what knowledge they have about this nation. And I was very disappointed, particularly by youth of today. Today means current youth, though they are changing now, but certainly those in normal situations, normal circumstances, normal environments, I did not discover grade of students, though they are very well educated, but they were distant from even knowing what Constitution is. Unfortunately, it is. They are very smart otherwise. They are well dressed, very well educated, and they can teach people. But when you ask them, I ask them, tell me, who rules this country? They had no answer. What law is ruling this country? They had no answer. And they are very educated people. Very, very educated. And I was not happy. If you told them, I told them. Even to my some close people. I tried them, at least you should know this. They took it lightly. Oh, what I do, when I need, I will read it. Question is, when you need it, you will never need it. You will never require it. But you have to know it. You cannot force people to do this, you see. You cannot force people to read this. It's either their prerogative. But just like court says, you are supposed to know law. If you murder someone and go to court and you are prosecuted, shall you say, I didn't know this, that there is a punishment after I kill someone? If you commit a crime, cognizable crime, and you are prosecuted, you cannot tell judge that I didn't know what law was or is. Shall judge accept that? Question. Period. What do you say? Same thing I'm asking you. If something happens to you and somebody asks you what Constitution says in this regard, you will say, why? Hey, what are you asking? What are you asking? What's Constitution? What is Constitution? I don't know what Constitution is all about. You're talking something alien to me. No, you cannot answer that. You are supposed to know, because you are citizen of this country, what is Constitution or what Constitution is. If you do not know, it is your ignorance, it's your carelessness. You didn't take care of that. When you get admission into school, they ask you questions. Tell me what is A, B, C, D, what is counting, what's a table is,
what a little bit of English or other language. Do they ask you or not? Even though you are paying them money for donation, you have to appear in interview. Not only you, your parent have to appear in interview. This means you are supposed to know that. You are supposed to know a CAT, CAT is cat, and RAT rat, BAT bat, and whatever you know, banana, apple, all that. Why you are supposed to know that? If you are supposed to know this just for education, just for admission to school, you are supposed to already admitted to this country. Don't forget. You are already admitted to this country because you are born in this country. Then by virtue of your birth, you are citizen of this country. No one can deny that fact. No law can deny your citizenship. So you are a citizen of this country. You are supposed to know what is constitution of this country and what is this country. Unfortunately, I've seen all these top class politicians, illiterate, believe me, illiterate to some extent. I'm not saying illiterate by education, illiterate by information. There are differences. So illiteracy doesn't mean illiterate of knowledge. It doesn't mean somebody is educated, one highly profiled, but if he doesn't know what is constitution, what shall you call that person? If he doesn't know what is his field, what should you call this person? Maybe he has a lot of degrees with, but if he doesn't know his identity, if one doesn't know his identity, what should we call that person? Ill-informed. So when I say illiterate, it doesn't mean you are illiterate by degrees, it is information. You are not able to pick up information which is required by law to put. You are supposed to know that. This is understood. This is by default. Okay, nobody is asking you to be thorough in that. At least you should know what is traffic light, right? You know meaning of green, you know amber and red. Why do you know that? That's by virtue of practice. By your, you can say, experience. You learn on field. So same things there. It doesn't mean you open a book and read all articles. You should at least know what we are. Some leaders always say, you see, I have seen all party leaders, and many citizens. हिंदुस्तान में ये होता है, हिंदुस्तान में वो होता है, हिंदुस्तान में ये होता है. This is ill information. I call it abusive information because you are ignorant of constitution. हिंदुस्तान था कभी, मुगलों के टाइम में था, आज नहीं है. हम हिंदुस्तान नहीं हैं. We are not Hindustan. This is spoken in clearly, black and white. I'm speaking. If somebody challenge. We are not Hindustan. Open Constitution and read first page after preambles. If you cannot read that, take water in your fist and sleep and die in that. If you cannot even pronounce name or noun of this country correctly, you may be prime minister, you may be opposition leader, or you may be anybody, anyone who won. If you cannot know name of your country, you are taking obsolete name of this country. Name of this country is not Hindustan. It is Bharat, and unfortunately India also. I am calling unfortunate because this is not my Sanskriti name. India was given by Goras, British, and other one was given by someone else. And we call Sare Jahan se Acha Hindustan Hamara. It's not Hindustan Hamara. Sare Jahan se Acha Bharat Desh Hamara ya Bharat Varsh Hamara. Why you are repeating same thing which is not existing? Hindu ham, what nonsense. You are not Hindu. There's no one Hindu in this country. We are Bharat. We are Bharat residents. We are Bharat Nagrik. We are Bharat citizens. We are not Hindu citizen. And those who say Hindu citizen, they must be taught a lesson. They are misleading people. Hindu religion does not exist anywhere in the world. It is a misnomer.
It's a Persian word or some other word, I don't know from where it's originated, but it doesn't apply to us. Yes, go to GCC countries or Arab countries, you will find people speaking Hindi. Let them speak. There is no such existing entity as others are. Those people who are living in fool's paradise, they talk like this. Those who are in conscious, who are in a mental power, they have to understand. Stop speaking this as this Hindustan. You are insulting yourself. You are insulting Constitution. You are insulting Bharat. You are insulting people of Bharat. If you repeat it, yeah, okay, by mistake sometimes it happens, you slip of tongue. But slip of tongue cannot be all time. Reiterating. All. That's why I feel sometimes upset. Because it's insult to me also. I am not Hindustan. I am not citizen of Hindustan. I am citizen of Bharat. Republic. Bharat Ganarajya. SSSDR, that's my identity. And no one can challenge it. Remember. No one can challenge it. And I am not going to prove it because I am already that. You prove it, I am not that. If you are challenging me, prove it. Why should I prove? I am a owner of this country. I have passport. I have voter card. I have Aadhaar card. I have bank management card. I have certification. I got education in this country. I have record that I belong to this country. Passport was not given to me as charity. Voter card was not given to me as charity. Everything was investigated. They say passport is a travel document. I don't understand from where they got their education. Yes, it is a travel document, but it's not given to everybody. Can you give travel document to British citizen? This travel document? Can you give it to American citizen? Can you give it to Gulf citizen? Can you give it to Pakistan citizen or Bangladesh citizen? Can you give that? Why are you talking foolish? Can you give passport to Sri Lankan people? Can you? Why do you say it's a travel document? It's not a travel document. It's used for travel. You cannot travel without passport. That's a fact of life. But it's not travel document. It's an identity document. Identity of a citizen of this country. It's clearly written as passport. It's under presidential order, and President of India expects and requests all world citizens to allow facilities whatsoever are required to bear of this passport. And it's written, when you are staying in foreign country, you are required, or you are for your benefit, you can register as your citizen of this country, staying in that country with our post of ambition or commission, or who is staying the ambassador there in that office. You can register as citizen. You are living in this country, you're citizen of Bharat. It was suggested to all citizens. And what does it mean then? If passport doesn't produce it, you are befalling people, you are abusing people. What does Passport Act says? What does Constitution says? Constitution mandates citizenship. Read Constitution. Read Constitution. If you cannot read, ask someone to read for you. Do not bluff in public. Passport is very much proof, evidence that you belong to this country as citizen. And voter card also proves same. Voter card means what? Kulcha chola, salad, jalebi. What is that? It's a constitutional right. Vote. It's constitutional purpose. Passport is constitutional according to you know. And voter card is constitutional because you are voting. And vote is a right of people according to Constitution. Yes, Aadhaar is something else.
I'm not arguing on Aadhaar, so it's giving complete details of you also, but you cannot challenge passport and voter card, because voter card is used as a statutory device, a statutory and constitutional device to elect representatives, and that is a power to citizen who is above 18 years. It proves that this person is a citizen above 18 years on date when this card was issued to that person. And below 18 years, they are not having this card, but they are citizens. Well, you cannot challenge that. And if you challenge that, you are cutting your legs, you're axing your feet and toe. Remember, access of everything is not good, it is bad. If you're causing excesses, you're torturing people like this, people shall behead you when they vote. Remember, you won't even survive. Behead means that your identity shall be beheaded. Your party shall be beheaded. Your faces shall be beheaded if you do like this. Those people who bring to you this position by vote, you are challenging them. Yes, there may be infiltration in this country, who denies that? But is this only way? You are not intelligent people. You cannot find solution how to catch them. If you cannot find solution how to catch them, then you are not intelligent people. You are not inventors. You are not innovators. You have lapse of mind. If you cannot find 2% people or 3% people where they are, you can say those infiltrators have also got a voter card and passport, but this is your problem. Whoever was there, this is problem. It's not public problem. You cannot generalize it and penalize all for this. You have to think on. You have to find solution for that. But you cannot lament all the citizens in this country. If we are not citizens of the country, then you are not MP of this nation. You are not PM of this nation. You are illegal. You are not president of the nation. You are illegal. For all this applies. It doesn't apply to judiciary because they are appointed. They are appointed by their eligibility. As MP, you are not appointed by your qualification. You are appointed just because of your age. Similarly, PM is not appointed by qualification, and also others except judiciary. So, do not act over smart. Act in national interest. Act in public interest. That shall be good for you, and that shall be good for public of this country. Do not consider public are fools. There are more than 40 crores people, students, young, 50 crores maybe, who are studying. They know what they are studying. Maybe they did not study well about our system for decades, but when problem has erupted, they are studying what is required to be studied. They are becoming support to public who ignored what we are to know, and they are now working on that. That's the reason they have come out in open, on streets, on roads, to raise their voices, and which is basic power of democracy, basic power of republic. They know that constitution of this country permits them, license them, do all this. They are within their limits to do. And if you start trimming that, breaking that, curtailing that, then you do all it for yourself. You will be trimmed, you will be defected, you will be deserted, you will be cutted out of system. It's not a warning. It's warning, come advice, come suggestions, because don't think people shall sleep so soon. They had been sleeping. You are lucky. People had been sleeping since 2014,
because you are lucky. You earn trust of people in addition to votes. That is your fortune. You earned the trust of people. You had become a charismatic leader. Charismatic leader, that, and you think now also you are a charismatic leader. No, you are not a charismatic leader. You are a charismatic spoiler. You damage your Christography. You have damaged your reputation. You have damaged your face. Now there's a black mask on your face. Don't you know? You are, by virtue of your work, have earned black masks on your face, on PM face, on all ministers' face, and all those political MPs' face who are playing with sentiments of people. Yes, there may be some people who are supporting you. I respect them as well, because this is also their fundamental right to oppose something or accept something. It's not their fault. But their only fault is they are not thinking of constitution. They are thinking of some leader. That's the only difference. Here on this side, in end, who are doing something for nation, for future of communities, for future of kids, not for future of leaders. But that side, that end, people are thinking only for leaders. That's difference, nothing else. Maybe due to ignorance or whatever, I don't know what interest they have, but they are just opposing for sake of opposing. Here also people are opposing for sake of creativity, for sake of change. See, if somebody challenges citizenship, believe me, future of that leader is gone. Future of that leader is gone on same day when that leader caused this. It may be error or whatever you make it may be mistake or miscalculation, but result has to come, because you are insulting whole nation. You have insulted citizens, you have insulted people. Once you are born in this country, you are citizen of this country. That's it. Nothing else. If your borders are under control, your security force cannot control people, cannot stop them, whose fault is this? This is fault of nation. This is fault of nation. Why people can infiltrate when we have lakhs of military personnel on borders? And even if people penetrate and you can say infiltrate, there should be some control device. Use that device. Why don't you use that device? But it's not question of control. This device, your aim, your target, your destination is not that what you're telling. Not that. Your destination is something else which you know very well, and people also know very well. No need to speak again. हम भारत के लोग पागल नहीं, भारत देश में सारे बेवकूफ नहीं है. कुछ हद तक बेवकूफ होते हैं, हर देश में होते हैं, और कुछ हद तक बहुत अच्छे भी होते हैं, हर देश में होते हैं. माइंड वाले भी होते हैं, डफर भी होते हैं, लेकिन लोग तो लोग होते हैं, पीपल तो पीपल होते हैं, राष्ट्र राष्ट्र होता है. हर देश में दोनों तरह के लोग होते हैं. सरकार को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं और सिस्टम को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, और उसके विरोध में भी होते हैं. ये मानवता है, ये सोच है, ये ब्रेन है. एक चीज मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगेगी. होना चाहिए, क्या गलत है उसमें? लोकतंत्र है भाई, लोगों का मैकेनिज्म है, पब्लिक का मैकेनिज्म है. सबके माइंड एक से नहीं होते, सबकी सोच एक से नहीं होती, सबकी मंजिल एक से नहीं होती. कहीं पर फ्री होते हैं लोग, कहीं इंटरेस्ट होता है लोगों का. कुछ लोग फ्री माइंड होते हैं, फ्री होते हैं माइंड से, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, किसी को गलत या सही नहीं कहते, सोच विचारते हैं. और कुछ होते हैं कि वो गुस्से में ही होते हैं कि कब मैं बीच में लगे तो शोर मचाओ. याद रख लेना, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होता है.
गुंडागर्दी करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी टांग अड़ा देंगे, नुकसान कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? बात तो रुकने वाली नहीं। आप पुलिस से डंडा लगवा देंगे, पुलिस से गोलियां चलवा देंगे, आंसू गैस छुड़वा देंगे, पिटाई करवा देंगे, उसके बाद क्या रुक जाएगा सब? जब आवाज आवाज उठ चुकी, आवाज बढ़ रही है, वो आवाज रुकती नहीं। ठीक है, आप कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप लोगों को पकड़ सकते हैं, थाने में बिठा सकते हैं, जेल में बिठा सकते हैं, या कहीं और छोड़ सकते हैं, या उन पे झूठे केस भी आप बना सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके पास, आपकी पावर में है। कोई भी आप उनके ऊपर कानून की दफा लगा सकते हैं। लेकिन याद रख लेना, कितनों पे? 10 पे, 20 पे, 100 पे, 1000 पे, लाख पे, करोड़ पे, अरब पे, किस पे? क्या आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि अगर 5-10 करोड़ भी लोग आपके सामने खड़े हो गए, आप संभाल लेंगे उनको? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, इतने लोग आ गए हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और आप कांपने लगे हैं। बात को जरूरत है समझने की। सरकार का मतलब हटफना नहीं होता। आपको क्या इंटरेस्ट है इस नियम में? आपको क्या चिंता है लोगों के दूसरे देश के हैं? आपको अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है, उन लोगों की चिंता है जिन्होंने इसको देश अपना नहीं माना 72 साल पहले, उनकी चिंता है आपको। अगर वो इस देश की चिंता करते तो 1947 में भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। मतलब उनके मन, उनकी आत्माएं, उनके मस्तिष्क इस देश के नहीं थे। होते तो आ जाते, और जो इस देश के नहीं थे वो यहां से चले गए। उनके साथ क्या कंडक्ट हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, और वो जो अब आ रहे हैं उनसे क्या कंडक्ट हुआ हमें उससे भी मतलब नहीं। तो बात की बात है, आज बात ये है कि आपके पास इस चीज की क्या गारंटी कि जो यहां आएगा यहां का होकर रह जाएगा, वास्तव में वो यहां का होगा? ये प्रश्न उठता है। ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले। अगर आपने यही सोच के बैठा है कि हम ऐसा करेंगे, हिंदुओं के वोट हमें मिल जाएंगे, वो आपकी गलत फहमी है। या वोट हिंदू के या मुसलमान का नहीं है। हमारे देश के मुसलमान अरब कंट्री से नहीं आए, तुर्की से नहीं आए, लीबिया से नहीं आए, लेबनान से नहीं आए, अल्जीरिया से नहीं आए, वो यहीं के हैं। ठीक है, उन्होंने धर्म बदल लिया, उनकी मर्जी, क्या करेंगे आप? जब संविधान धर्म की बाइंडिंग नहीं करता, आपको क्या हक है बाइंडिंग करने का? वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, वो कुछ भी ना बने, उसकी मर्जी। उसके लिए भगवान अच्छा है या अल्लाह अच्छा है, उसकी मर्जी। वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसकी मर्जी। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बताइए? ये प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम जानबूझ से बना रहे हैं। आपको देश को शांति में नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि बस लोगों में लड़ाई करा दो आपस में। शायद आपका मैनिफेस्टो यही था, यही था मैनिफेस्टो आपका। और कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी कम नहीं है। नहीं तो इतने लोगों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी। आज हो ये रहा है कि जब लोग सड़क पे आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग, लाखों लाखों लोग जगह जगह आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ चुके हैं सड़क पे, हो सकता है सब मिला के करोड़ों हो जाएं, तब आंख खुलती है सरकार की, तब आंख खुलती है मिनिस्टरों की। वो कहते नहीं है, लेकिन उनके दस्त तो लगे हुए हैं, नर्वस तो हो चुके हैं कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था, ये क्या हो गया, हमारा तो प्लान फेल हो गया। उनका प्लान फेल हो गया, उनको इस बात की चिंता है। और जब भाई नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त कोई चीज हो जाती है, तो उसको डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ता है। वो डैमेज कंट्रोल वो नहीं कर सकता जिसने डैमेज किया है, वो क्या कंट्रोल करेगा? अगर उसको समझ सारी आती तो वो डैमेज ही नहीं करता।
डैमेज जब हो जाती है कोई चीज, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है निकालना। एक बार जब करोड़ों लोग भड़क जाएं इस बड़े देश में, उनकी समझ चेंज हो जाए, एक बार माइंड सेट हो जाए किसी भी बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी नियम के बारे में, हांगकांग बनते देर नहीं लगती, इराक बनते देर नहीं लगती, लीबिया बनते देर नहीं लगती। याद रख लेना, पहले मिस्र में भी यही हुआ था। बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर जाती हैं एक गलत कदम से। रावण की सत्ता हिल गई थी एक गलत कदम से। महाभारत में पूरा कौरव हिल गया था एक गलत कदम से। आप क्या करना चाहते हैं? अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधार लेना चाहिए, सिंपल बात है। क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, आपसे गलती हो गई, ठीक है, हम ठीक कर लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो महान होते हैं, याद रख लेना। अगर बाई चांस कहीं एरर हो गई तो ठीक करना चाहिए ना। साइंस भी यही कहती है, इंजीनियरिंग भी यही कहती है, भाई एरर हो गई, हमने ठीक कर लिया, लेसन लर्न, उसमें कहते हैं लेसन लर्न। तो आप तो सबसे बड़े टीचर हैं, आपको तो लेसन की जरूरत ही नहीं है, आप तो लेसन सीखना चाहते ही नहीं हैं। Had you any mindset to learn something after damages are done, you would have been lamented intellectual person. But you have no such intention. You say, you think, you contemplate always as understood that you know everything. You know everything. You know plastic surgery done to Ganesh. Your people know internet was available in Mahabharata time. Your people have complete information of everything. Though I am calling your people, they are my people as well, because I am citizen of this country. You are government of this country. You are my prime minister, but you have to conduct as such. Arrogance got no value. Fact is, damage has been done to the reputation of our country. It has caused shock to people of this country. Crores of people are under shock by your management. Then you have to treat them. You have to care them. But you are not doing that, because you are having pride in every action. Oh, I am doing this, and your bhakts are saying, Modi hai to mumkin hai. Yes, Modi hai to mumkin hai. मोदी है तो मुमकिन है, गोली चला दो इनोसेंट पे। मोदी है तो मुमकिन है, घरों में घुस के डंडे मारो, सर फोड़ दो, दीवार तोड़ दो, सामान फोड़ दो। मोदी है तो मुमकिन है। एक मोदी है, एक योगी है, एक शाह है। एक योगी है, एक मोदी है, और शाह है, वो की सारे झल्ले हैं। बाकी सारे झल्ले हैं, क्योंकि है ही नहीं कोई। सब नाम के चेहरे हैं, काम के नहीं। मोदी जो कहेगा, शाह जो कहेगा, योगी जो कहेगा, वही तो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है ये संविधान के ऊपर है, सबसे ऊंचे हैं ये। संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान से ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब ये कि इनकी शपथ अब संविधान लेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, इनकी शपथ संविधान लेगा कि हे मेरे बुजुर्गों, मेरे मोदी, योगी और शाह, मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा काम करूंगा। यही मतलब हुआ ना। मैं किसी बात का दुश्मन नहीं, किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं, लेकिन व्यक्ति जैसा काम करेगा वैसा कहा जाएगा, उसमें मोदी हो या कोई और भी क्यों ना हो। शुक्र मनाओ कि आप लोगों को यहां बैठने का मौका मिला, इन सीटों पर जहां बैठे। 140 करोड़ में एक ही आदमी को मिलती है ये सीट, आपको मिल गई। भगवान का शुक्र मनाना चाहिए था, पब्लिक का शुक्र मनाना चाहिए था। लेकिन आप तो पब्लिक को कह रहे हो कि नागरिकता का प्रूफ दो। इसे क्या कहेंगे? मैं तो इसको पागलपन कहता हूं, क्योंकि अपने नागरिक से आप सबूत मांग रहे हैं। पागलपन नहीं तो क्या है ये? आपके पास पासपोर्ट रिकॉर्ड है,
आपके पास वोटर्स का रिकॉर्ड है, आपके पास दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है, आपके पास कौन सा रिकॉर्ड नहीं है? उससे भी रजिस्टर बन सकता है। आप कह सकते हैं भाई अपने पासपोर्ट सब बनवा लें, आप कह सकते हैं अपना वोटर कार्ड सब बनवा लें। चलो वोटर कार्ड माना 21 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर बनता है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन पासपोर्ट में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी बनवा सकता है। आपका बन जाएगा, सिटीजनशिप रजिस्टर बन जाएगा। मत चार्ज कीजिए पैसे लोगों से, फ्री में बना दीजिए। जब बनाएगा तो रिकॉर्ड में लिखा ही जाएगा, सारा फॉर्म भरा ही जाएगा, पुलिस की वेरिफिकेशन भी होगी। आपको फिर डॉक्यूमेंट्स किस चीज के मांगने हैं? पासपोर्ट पर आपने ही कहा जी खाली मैट्रिकुलेशन का या स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट काफी है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब पासपोर्ट को रिन्यू कराया था तो बाकी सर्टिफिकेट लगाए थे, इसके अलावा डिग्री का दूसरे सब वापस कर दिए, बस उन्होंने मैट्रिकुलेशन या स्कूल का सर्टिफिकेट रखा। इसका मतलब यह है कि आप उस सर्टिफिकेट से पासपोर्ट इशू करते हैं। ऑफ कोर्स पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, वो अलग इशू है, वो देता है आदमी क्रिमिनल है कि नहीं है, वो उसके लिए होता है। वो कोई इसके लिए नहीं होता कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उसके लिए नहीं होता। उसमें इसलिए होता है पिछले सालों में आप कहाँ रहे हैं, कोई क्राइम तो नहीं किया या नहीं किया। उससे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन पासपोर्ट इश्यू होने से इस बात का मतलब है। नागरिक का मतलब ये नहीं होता कि एक जगह 50 साल रहेगा, ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं आप, नागरिक होना चाहिए। तो पासपोर्ट के रिकॉर्ड आपके पास हैं, वहां से तो नागरिकता मिल जाती है आपको, फिर आप क्यों बहस करते हैं? आपके पासपोर्ट में साफ लिखा है कि नागरिक को दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा देता है, और राष्ट्रपति कहता है सारी दुनिया के लोगों से कि मेरा जो व्यक्ति आ रहा है, मेरा जो सब्जेक्ट आ रहा है, इसका ख्याल कीजिए जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है वहां। ये पासपोर्ट में लिखा है। फिर आपको कौन सी बीमारी हो गई? अब क्या बीमारी हो गई है आपको? आप सीधा बोलिए कि जिनके पासपोर्ट नहीं बने हैं सरकार उनका पासपोर्ट बनाना चाहती है, इसलिए आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अगर कोई पैसा नहीं है मंगाने का तो ठीक है, आप उनके रेट कम कीजिए या उनको फ्री में दीजिए, कुछ भी कीजिए, सोल्यूशन बहुत। वोटर कार्ड एज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन पासपोर्ट में कोई उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपके पास अस्पतालों से सारी इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ बच्चा पैदा हुआ, बर्थ कहाँ कहाँ किसका हुआ, वो इंफॉर्मेशन आती है। वहां पे आप माँ बाप के पासपोर्ट के लिए ले सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट वहां रखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया होता, किसी बुद्धिमान आदमी से बात की होती, तो ऑटोमेटिक आपका वही रजिस्टर बन जाता। कोई आवश्यकता नहीं है इतना धंधा फैलाने की, कोई आवश्यकता नहीं थी सब करने की, कोई आवश्यकता नहीं थी। एनआरसी लाएंगे, ये लाएंगे, आप पैनिक में काम कर रहे हैं। आपकी नस जल्दी जल्दी चल रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपका बीपी हो गया है, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, तेज चलूं कि आहिस्ता चलूं, पानी पीऊं कि चाय पीऊं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप अकेले नहीं जा रहे, याद रखनी चाहिए आपको, आप अकेले नहीं चल रहे इस देश के साथ, आपके साथ 140 करोड़ लोग चल रहे हैं। आप उनको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते, आपको हक नहीं है, आपको संवैधानिक हक नहीं है, आपको कोई भी कानून में हक नहीं है कि उनको गलत रास्ते पे लेके जाएं, क्योंकि गलत रास्ते का मतलब समुद्र की तरफ जाता है। आप क्या उनको समुद्र में डुबाना चाहते हैं? ये बात सोचने की चाहिए। चिल्ला चिल्ला के बोलने से समस्या का हल नहीं होता, सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मुझे खुशी है इस बात की, इस देश का युवा, इस देश का दूसरा वर्ग, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के हाई प्रोफेशनल जजेस, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बाकी लोग भी, मेरे जैसे बेवकूफ लोग, अनपढ़ लोग मेरे जैसे, सोचने लगे हैं कि आखिर हम हैं कौन? कौन है हम जो इतना शोर मच रहा है? कौन है हम हैं कहां? कहां आ गए चलते चलते? हम भारत में ही थे, भारत में ही चले, भारत में ही चल रहे हैं।
हम पता नहीं लग रहा उस भारत में हैं जहां से चले थे या किसी और भारत में आ गए। एक कविता बन जाती है, मजाक बन जाता है। कपड़े देख के पहचान लेते हैं हम। यस, आप पहचान लेते हैं। बहुत बड़े जासूस हैं आप, बहुत बड़े जासूस हैं आप, सब पहचान लेते हैं। कपड़े देख के पहचान सकते हैं, संविधान देख के पहचान नहीं सकते। देश का माइंड देख के पहचान नहीं सकते आप। कपड़े पहचान सकते हैं, युवा को नहीं पहचान सकते। युवा की फीस को नहीं पहचान सकते, कपड़े पहचान सकते हैं। आप ये नहीं पहचान सकते कि गोली से कोई मर जाता है। आप ये नहीं पहचान सकते डंडे से चोट लगती है, ये नहीं पहचान सकते आप। पब्लिक को तंग करने से नुकसान होता है, ये नहीं पहचान सकते आप। आप कपड़े से पहचान सकते हैं। आपको एक वर्ग से दुश्मनी क्यों है, ये नहीं बता सकते आप। ऐसा उस वर्ग ने आपके सपूत में क्या किया है जो उनकी दुश्मनी आपकी हो गई, ये नहीं बता सकते आप। क्यों दुश्मन है आप उनके? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? आप ही हैं। क्योंकि उन्होंने आपको वोट देना पसंद नहीं किया इसलिए, या वो पसंद नहीं करते आपको इसलिए? आप बहुत ऊंचे पद पे हैं, और जितना ऊंचा पद होता है आदमी को उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ऊंचा पद होता है, सबसे ऊंचा एग्जीक्यूटिव में। प्रधानमंत्री की एक एक बात की वैल्यू होती है, एक एक शब्द के मीनिंग निकाले जाने चाहिए, जो हमारे चैनल्स नहीं करते। वही बोलते हैं जो वो चाहता है प्रधानमंत्री, वो नहीं बोलते जो बोलना चाहिए। उस जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं समझता, उस एंकर को एंकर नहीं समझता, जिसमें दिमाग नहीं होता। प्रधानमंत्री की हर बात एक फ्रेज होती है, एक इडियम होता है, एक कविता होती है, एक नाटक होता है। उसकी हर बात में नाटक छुपा होता है, उसकी हर बात में दूरदर्शिता छुपी होती है, और उसकी हर बात में धूर्तता भी छुपी होती है। धूर्तता हुई थी एक बार, यदि आपको याद हो, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कश्मीर के बारे में? कश्मीरियों को हम गोली से नहीं, गले लगा के सुलझाएंगे, कहा था। याद है? कश्मीर के बारे में हम गले लगाएंगे। कश्मीर को तो गले लगा लिया उन्होंने, अच्छी तरह गले लगा लिया। ऐसा गले लगाया, ऐसा गले लगाया कि दोनों चिपक गए आपस में। कश्मीर से प्रधानमंत्री चिपक गया, प्रधानमंत्री से कश्मीर चिपक गया। कैसा गले लगाया, वाह! इनकी बात के मतलब यही जाने। और ऐसा ही असम को गले लगा लिया, और बाकी देश को गले लगाएंगे। इनके गले से तो भगवान बचाए। ये गले पड़ेंगे या गले लगाएंगे, नहीं, एक ही बात के दोनों मतलब है। कोई नहीं जानता जब ये गले की बात कर रहे हैं, गले में लगाएंगे, गले को काटेंगे, क्या करेंगे? शायद शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, अल्लाह भी नहीं जानते होंगे ये क्या करेंगे। काल का भी नहीं जानती होगी ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके माइंड को पढ़ना आसान नहीं है। बड़े से बड़ा तांत्रिक फेल हो जाएगा इनके माइंड पढ़ने के लिए, नारद मुनि फेल हो जाएगा इनका माइंड पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकी क्षमता इतनी ज्यादा है, क्षमता इतनी ज्यादा है इनकी। और शायद हिटलर भी इतना नहीं करता जो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकता हिटलर भी इतना। पता नहीं कहां से पैदा हुए हैं ये लोग, कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं ऊपर वाले के, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के। लेकिन प्रधानमंत्री पहले अपना कर्तव्य तो निभाए, प्रधानमंत्री तरह बात करके तो दिखाए। टुच्ची बातें करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं अच्छा हो जाता। किसी को कह देंगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, कहीं मस्जिद मंदिर कह देंगे, कहीं कब्रिस्तान शमशान कह देंगे। सेकुलर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करे तो स्वयं को गलानी होती है। यहाँ कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदमी गलत है, देश सही है। कृष्ण भी तभी करता है, राम भी तभी करता है जब बहुत लिमिट से बाहर हो जाए। अभी शायद बाहर लिमिट से नहीं हुई है, लेकिन होने जा रही है। टाइम पे पब्लिक बाहर आ रही है, ये अच्छा हुआ। इन्होंने सोचा था पब्लिक सोती है, सोती रहेगी,
क्या कर रहे हैं तुम, जो करना है कर जाओ, चांस मिला है, जो करना है कर लो। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, पब्लिक जाग गई, एक जागा, दूसरा जागा, तीसरा जागा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टूडेंट्स की फीस में उंगल दे दी थी, विद्यार्थी को फीस में उंगल दे दी। अब बेचारा विद्यार्थी सोच में पड़ गया, ये क्या बात है, मैं कहां से लाऊं इतना पैसा। जो गरीब विद्यार्थी जिसका माँ बाप नहीं कमाता ज्यादा, यूनिवर्सिटी में कहां से देगा फीस इतनी। और ये दलाल टीवी वाले, गद्दार टीवी वाले, देश के गद्दार, ये कहते हैं 10 रुपए से 300 रुपए तो हुए। अपने अनपढ़ गंवारो, पूरी स्टडी तो कर लो, जो बोल रहे उससे पहले देख तो लो कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। सिर्फ सरकार को सपोर्ट करने के झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं दुनिया में। जब कहते हैं राम नाम सत्य है, मतलब सत्य का नाम राम है, जो झूठ का नाम हराम है। राम नाम सत्य कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बताइए। जब मृत्यु होती है तभी कहा जाता है वो, क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु झूठ नहीं है। राम नाम सत्य है, मतलब सत्य का नाम राम है। तो झूठ का नाम क्या हो गया, रावण हो गया या हराम हो गया, यही मतलब। तो जो झूठ बोलता है वो या तो रावण होता है या हराम होता है। हराम का मतलब होता है गैर कानूनी, हराम का मतलब होता है इलीगल। आपका काम इलीगल, आपकी सोच इलीगल, आपकी इंफॉर्मेशन इलीगल, आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। यही आपका काम है। अपना प्रोफेशन को लात मार दिया आपने किसी को खुश करने के लिए। ऊपर वाला आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जिस काम के लिए भेजा था आप वो काम नहीं कर रहे। आपको सुनने वाला एक समय आएगा, कोई मिलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं आपके प्रोग्राम को सुनने वाला। ऐसा वक्त आने वाला है। आपको निकाला जंतर मंतर से धक्का मार के, याद है आज तक वालों और चीनी न्यूज वालों, किस तरह से पब्लिक ने आपको घुसने नहीं दिया, वहां घुसने के बाद निकलवा दिया आपको। वो तो आपसे बात नहीं करना चाहते। मोदी मीडिया कह लो, गोदी मीडिया कह लो, झूठा मीडिया कह लो, बदमाश मीडिया कह लो, देशद्रोही मीडिया कह लो, कुछ भी कह लो, उसको आप सब चलेगा। क्योंकि जो झूठ बोलता है वो देशद्रोही होता है। और ये सब लोग शाम को प्रोग्राम लेके बैठ जाते हैं, दुकानें खोल लेते हैं भुट्टे बेचने की, चाय बेचने की। आओ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, आओ मुसलमान के बारे में बात करते हैं, आओ दूसरों के बारे में बात करते हैं। सबको गालियां देते रहो और अपने मस्ती में रहो। 2-3 घंटे लोगों को भी खराब कर दो और चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। सब दूसरे जैसे पता नहीं लड़ाई हो रही है, यहीं से वो सारी कृत्यों को अटैक कर देंगे। फिल्म आई थी जिसमें बटन दबा के अटैक किया जाता है, या ट्रम्प कहता है कि मेरे डेस्क पे बटन है, मैं बटन दबा दूंगा तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो उधर से नॉर्थ कोरिया वाला भी कहता है मेरे डेस्क पे ही बटन है, मैं दबा के तुम्हें खत्म कर दूंगा। कुत्ताशाही इसे ही कहते हैं, कुत्ताशाही। जानते हैं ना क्या होती है? जब कुत्ते भौंकते हैं अपने एरिया के अंदर, एक तो दूसरे तरह के कुत्ते को नहीं आने देते हैं। जो ट्रैवलर होता है उसको मारते हैं, भौंकते हैं, उसको लड़ाई करके वीजा देते हैं, भाग जाता है। और कोई कार आती है तो यही कुत्ते भागते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भौं भौं करते हुए, जब तक कि कार डिसअपियर नहीं हो जाती है। फिर कहते हैं क्या करूं मैं खामा का भागा, कोई पर्पस नहीं था भागने का। आहिस्ता आहिस्ता हाँफता हुआ वापिस आता है। फिर दूसरी कार आती है, फिर भागता है, मतलब फिर वापस आता है, फिर भागता है, फिर वापस आता है। और सारे भागते हैं, एक नहीं, एक को सुनते दूसरा भी भागता है, भागता है, भागता है। परिणाम उसको ये समझ ही नहीं आता कि मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं बार बार क्यों भाग रहा हूं। उसके पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ता, फिर भागता है। आप उस क्लास से हैं क्या? आप सोसाइटी के उस क्लास से हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप क्लास के नहीं, तो आपका व्यवहार ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न सबसे है। चाहे कोई राजनीतिक नेता हो या कोई टेलीविजन चैनल का मालिक हो, कोई भी हो,
आप पब्लिक के पैसे को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? हम फीस देते हैं आपको टीवी चलाने के लिए, प्रोग्राम दिखाने के लिए, न्यूज़ दिखाने के लिए, लेकिन आप तो अपने हिसाब से न्यूज़ डिजाइन करके देते हैं जो गलत है। गलत है। न्याय करना हर व्यक्ति का अधिकार है, ड्यूटी है। न्याय खाली कोर्ट से ही नहीं होता है, न्याय सड़क पे भी होता है, न्याय घर में भी होता है। कोर्ट में तो तब जाता है कोई जब न्याय नहीं मिलता उसको, उसके साथ अनजस्टिस होती है, तब कोई भी आदमी न्यायालय में जाता है। अगर सब सही मिलने लगेगा तो न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी जाने की। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? बकवास सारी। आपको तो बकवास लगेगी, लेकिन बकवास नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये अपनी बीती है, ये अपना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, ये जिंदगी का तजुर्बा है। मुझे कोई शौक नहीं है अपना टाइम खराब करने का, सुबह सुबह उठ के तैयारी करके आपसे बात करने का। मुझे कोई खास शौक नहीं था, लेकिन मैं भी सोचता हूं अगर मुझे कुछ आता है तो चला जाऊंगा, दुनिया छोड़ के पड़ा रहेगा सब जो मेरे माइंड में है या मेरी बुक्स में है या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो क्यों ना पब्लिक से शेयर कर ली जाए। मेरा उद्देश्य कोई लेने का नहीं है उनसे, मुझे मिलने वाला भी नहीं है, मैं जानता हूँ। और मैं हर एक को बताता भी, अपने घर वालों को भी नहीं बताता। मैं जिनके साथ रहता हूँ उनको भी नहीं मालूम कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। मैं आवश्यक नहीं समझता किसी को बताना, क्योंकि कुछ बातें चुपचाप करो तो अच्छा होता है। पब्लिक को बस फायदा होना चाहिए उसका। अब फायदा लेना या नहीं लेना ये आप लोगों के हाथ में है। मैं किसी से फोर्स नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरी इंफॉर्मेशन को आगे भेजो या ना भेजो, आपकी इच्छा। अगर आपके अंदर कुछ देश के बारे में बात है कि दूसरों को भला हो जाए तो आपकी इच्छा है। नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं आप ही की तरह सड़क पर चलने वाला एक सड़क छाप हूं। बस इतना हूं, सड़क छाप नागरिक, जो वास्तविक नागरिक होता है। गलियों में चलने वाला, सड़क पे चलने वाला छोटा मोटा आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसको पुलिस आके डंडा मार दे, चल हट यहां से, उसी लेवल का आदमी हूं। ठीक है, पढ़ाई की थी, काम भी किया, इंजीनियरिंग की डिग्री की, डिप्लोमे किए, पढ़ाई की, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, सब किया। अपने लिए किया, अपने समाज के लिए किया, रोटी खाने के लिए किया, अपने देश के लिए किया। करना पड़ता है। किसके लिए करोगे? अकेले के लिए तो नहीं कर सकता कोई भी, देश के लिए ही करेगा। देश में बाहर भी काम किया, वहां से जो कमाया वापस भेजा यहां, क्योंकि हमें देश ने कुछ दिया था। मुझे देश ने शिक्षा दी, सस्ता खाना दिया, सस्ती पढ़ाई दी, अच्छे टीचर दिए, ज्ञान विज्ञान दिया, जितना हम सीख सके थे सीख। तो मुझे तो याद है वो कि जब मैं फिफ्थ, एक तरह से इसे आप मुफ्ती कह सकते हो और क्या कहेंगे, जब ज्यादा खर्चा नहीं होता आपकी पढ़ाई में, आपको इंजीनियरिंग की डिग्रियां मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए, और वो भी एक तरह से फ्री में, तो क्या कहेंगे आप? लोग तो लाखों करोड़ रुपए खर्च के लेते हैं डिग्रियां। हमें तो 1971 में मैंने स्कूल पास किया था, कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ था। उसके बाद 74 में पास किया कुछ कोर्स, फिर 80 में पास किया। मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई। छोटा मोटा काम करते थे, कमाते थे, खर्चते थे, जैसे भी करते थे हमने की। लेकिन हमें ये सब व्यवस्था क्यों मिली? क्योंकि सरकार की पॉलिसीज यही थी कि देश के समाज को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ज्ञान के विज्ञान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सच बात थी। लेकिन आज की सोच बदल गई है। आपने सब कुछ व्यापार बना दिया है। सब कुछ व्यापार बन गया है। आपका खाना, आपका काम, आपका धंधा, आपकी पढ़ाई, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, ऐसा लगता है सब व्यापार में तब्दील हो गया है। और आपका वोट भी। सच तो यही है। ये रैलियां भी, लोग रैलियों में जाते हैं, कहीं भी होती है, 2-2-300 रुपए लेते हैं, खाते हैं, सब करते हैं। कोई मुफ्त में नहीं जाता, सच तो यही है, किसी की भी रैली क्यों ना हो। लेकिन जो रैली आज हो रही है, इसमें पैसे कोई नहीं जा रहा, क्योंकि पैसे देने वाला कोई है नहीं।
कांग्रेस की रैली होती थी तो पैसे लोग देके जाते थे, पैसे मिलते थे लोगों को, झूठ तो नहीं, सच बात तो यही है। बीजेपी की रैली होती तो पैसे दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है। वो कहां से आता है? वो सब डिजाइन रैलीज हैं, मैं उसको प्लॉट रैली बोलता हूं, जहां पैसे खर्च के ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो देश हित में नहीं हो सकती। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश के हित में वही होती है जो पब्लिक करती है। 15 अगस्त मनाती है, देश के हित के लिए मनाती है। 26 जनवरी लोग मनाते हैं, देश के हित में मनाते हैं। वो होती है सेलिब्रेशन। जबरदस्ती सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। आज का युवा जबरदस्ती नहीं कर रहा, अपने मन से, अपने तन से, अपने दिल से कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि पब्लिक भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ रही है। वो समझ रही है कि पॉलिटिक्स अब उस लेवल पे पहुंच गई जहां से गिरना उसका शुरू हो चुका है। हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। हमें वोट देने पे पॉलिटिक्स हमारी खत्म नहीं होती, हमारी वोट देने के बाद शुरू होती है। वोट दे दिया चाहिए, अब हमारे कौन लगते हैं, हम ये नहीं सोच सकते। हम तो ये कहेंगे कि बताइए आप कर क्या रहे हैं। माई पॉलिटिक्स स्टार्ट्स वेयर पॉलिटिक्स स्टॉप्स for thinking of these political leaders. They take people for granted after votes are achieved. That political system I reject. My political system starts where votes are cast and these leaders are elected and they have to work from there. I politics start. I consider my politics from there. That's the difference of understanding. Just casting vote is not end of politics, is a start of politics. You have to check your leaders, your elected representatives, what they are doing. You have to keep a watch on them. You have to keep a watch on them. And you have to check them, you have to question them. That is a politics. You have to see what's their policy, which party they belong to, what they are doing, or they are independent candidates. If I elect someone and that person goes there and someone buys that person, this means my vote has gone waste. If I vote someone and somebody buys that vote, buys that representatives, where do I stand? Do I vote that somebody buys, somebody to whom I vote, he sells himself? I don't accept that. That's against ethics. It's against my principle. That's against my thought. I completely reject that. I don't accept that. Why should I accept that? This means my vote is sellable. My vote is transferable. And transferred by whom? By my elected representative. I should slap such a representative, believe me. I should give thappad on his representative. If not by hand, by shoes. Because that person deserves that. My vote is selling this rubbish elected representative. I voted for that person and he submits to some other person. This is criminal act. Voted criminal act. Means you are taking me for granted. Without my permission, you are supporting someone. Why I have voted you? This is very common now. Because MLAs are on sale, MPs are on sale. This means people are on sale. Constituency is on sale. Is this democratic way? Do you think this is democratic way? क्या यही लोकतंत्र है? मैं आपको वोट दूं और मेरा वोट आप आगे बेच दो, तो मैंने वोट आपको बेचने के लिए दिया, तो थप्पड़ ना मारूं मैं आपके, कि जूते ना पीटूं मैं आपको? क्यों? मेरा पूरा हक बनता है। अगर मुझे आपने इतना हल्का ले लिया, मुझे आपने इतना हल्का ले लिया एक नागरिक को, देश के को, तो आप देश को कितना हल्का लेंगे? क्योंकि हल्का नागरिक जब हो गया तो देश भी हल्का हो गया,
क्योंकि देश बनता है नागरिकों से ही, और आपने नागरिक की टांग तोड़ दी। कमाल है। ऐसी राजनीति तो संविधान में नहीं लिखी है, कहीं भी नहीं लिखी है। दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। मतलब आप जो दिल में आएगा वो करेंगे। हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपना मालिक नहीं चुनता है हम आपको। हमारे प्रतिनिधि हो तो हमसे पूछ के बात करनी चाहिए आपको। आप क्या समझते हैं हमने आपको प्रॉपर्टी दे दी अपनी, 5 साल की जो मर्जी करो, ऐसा समझते हैं ना आप? तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। हमने आपको अपना मान सम्मान दिया, अपना अधिकार दिया, अपने आप को बेचने दिया आपके हाथों में। होश में रहोगे तो अच्छे रहोगे, और नहीं तो यही जनता जो लाइन में लग के आपको वोट देती है ना, यही जनता लाइन नहीं लगेगी, फिर आपको लाइन में लगा देगी, भागने की लाइन में। भागो, कहाँ भागते हो कि जनता आती है। ये सीटें आपको नसीब नहीं होंगी जिन पर बैठे हो, कहाँ तक भागोगे? जहां भागोगे जनता मिलेगी, जिधर भी जाओगे जनता मिलेगी। बहुत बड़ा देश है, कितना भागोगे? भागते जाओगे, भागते जाओगे, भागते जाओगे, कोई पानी नहीं पूछेगा। पानी पिला पिला के कुटाई जरूर कर देगा, जैसे आप पब्लिक की कुटाई पुलिस के हाथों करा रहे हैं, करा रहे हैं, सबूत सामने है। और श्रीमान न्यायालय सो रहे हैं, बहुत ज्यादा काम किया, सो जाओ, थक गए हैं। जिस देश का न्यायालय पब्लिक मरती रहे, लोगों की आग लगाते रहे लोग, पुलिस लोगों को मारती रहे, गुंडे आग ला के भाग जाएं, और कोर्ट आराम से देखता रहे, इस कल्पना में कि इन्हीं लोगों ने आग लगाई थी, तो क्या होगा इस लोकतंत्र का? क्या होगा इस न्याय तंत्र का? इतने कमजोर हो गए हम, इतने कमजोर हो गए। मैं तो कमजोर नहीं हुआ, मैं तो और मजबूत हो रहा हूं, ये देखकर कि अन्याय कितनी अच्छी व्यवस्था है अन्याय की। वो कहते थे स्मगलिंग में, पिक्चरों में, स्मगलरियों में बेईमानी नहीं होती है, ईमानदारी में बेईमानी होती है। तो शायद वही दिख रहा है, वही देख रहे हैं हम, कैसे नेता सोचते हैं और कैसे नेताओं के नेता सोचते हैं, कैसे उनके खरीदे हुए बच्चे सोचते हैं, वही देख रहा हूं हम। आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ कितनी गालियां आएंगी फेसबुक पे या कहीं और, खुश हो जाते हैं सुन के हम, वाह क्या कहा इसने, अरे यार एक ही गाली दी है, और दो ना यार, एक से क्या होगा। माँ की गाली, बहन की गाली, बाप की गाली, और पता नहीं किसकी गाली। देशद्रोही हो, बदमाश हो, लुच्चे लफंगे हो, दे लो भाई, मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। जबान आपकी, कलम आपकी, माँ बाप आपके, संस्कृति आपकी, देश आपका, सब कुछ आपका। अगर आपने पढ़ लिख के गाली देना सीखा है तो आपको धन्यवाद, और आप इसे सीख भी क्या सकते हैं। मतलब आपके टीचर ने गाली सिखाई आपको, आपके माता पिता ने गाली सिखाई आपको, एक ऐसी चीज अपनाई आपने और उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, किस लिए? अपना गुस्सा निकालने के लिए निकालते रहो। आपके कहने से ना मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, आपके कहने से ना मैं लुच्चा लफंगा हो जाऊंगा, कहते रहिए। कुत्ता जिस तरह कार के पीछे भागता है, आप भी भागते रहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब तो आदत सी हो गई है, अच्छा नहीं लगता वो गाली जब ना आए तो। आप इनसे कोई प्रश्न कीजिए, कोई जवाब नहीं देंगे, गाली देंगे। आप मोदी के खिलाफ लिखिए, और आप वहां लिखिए जब वो सपोर्ट करता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि बम फोड़ दो उसके सामने। क्या फर्क है आपकी सोच में और उस आतंकवादी की सोच में जो देश में आग लगाना चाहता है? दोनों में क्या फर्क रह जाता है? मतलब आपको एक नेता से इतना प्यार है कि उसके खिलाफ सुन नहीं सकते कुछ भी। क्यों भाई, क्यों? क्या मिला आपको उससे? आपको ऐसा प्यार क्यों है उससे? इसका मतलब आप उस नेता से प्यार करते हैं, उस देश से नहीं करते। उस देश के संविधान को भी नहीं जानते आप, उस नेता के विधान को जानते हैं। आपसे हम जब प्रश्न पूछते हैं संविधान के बारे में बात कर दीजिए, गायब हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं।
भिन्न 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 करने लगते हैं। अरे पढ़े लिखे हो तो बहस करो, पॉइंट टू पॉइंट बहस करो, ताकत है तो। मोदी की तारीफ करने से देश नहीं चल जाएगा, और कांग्रेस की बुराई करने से भी नहीं चल जाएगा। कांग्रेस से मुझे क्या लेना और मोदी से मुझे क्या लेना? मुझे देश से लेना है, मुझे देश से लेना है, देश को देना भी। क्या है कांग्रेस और क्या है मोदी? औकात क्या है इनकी? एक प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया? पहला प्राइम मिनिस्टर है दुनिया का। बहुत आए बहुत चले गए, क्या फर्क पड़ने वाला है? देश वहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगा तब भी और आप मर जाएंगे तब भी। देश नहीं रुक सकता। अपनी बुद्धि के ताले को खोलो, उसमें जंग लग गया है, साफ करो उसको ब्रश से। और जंग जब तक रहेगा आपकी सोच नहीं खुलेगी। कोई नेता किसी का ना हुआ है ना होगा। ठीक है, आपको पैसे मिलते होंगे, मान लेते हैं, आपको तनख्वाह पे रखा है उसने, कोई बात नहीं, कमाइए आप, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जरा अच्छी अच्छी गालियां दीजिए ना। क्या गंदी गंद छोटी छोटी गाली देते हो? अरे ऐसी गाली तो दो कि गुस्सा तो आए। 4-5 गाली चुनी है, वही वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं। हिम्मत नहीं कि पूरी फॉर्म में लिख दें। उन्हें ये डर होता है कि कहीं कोर्ट में ना चला जाए आदमी, मेरी खिंचाई ना हो जाए, ये भी डर होता है। शॉर्ट में लिखेंगे, एब्रीविएशन फॉर्म में। भैया पूरी लिखो, डरते हो? फिर दूसरे के लिखिए को भी पढ़ो, तब गाली, एक और गाली, उनका जवाब दे दो, एक और गाली। जिसने सीखा ही गाली देना है तो वो क्या बहस करेगा, वो क्या संविधान पढ़ेगा? और वो मोदी का चेला, तो कैसा चेला वैसा गुरु, सिंपल सी बात है। जब चेले की कैरेक्टर से पता लग जाता है कि इसका शिक्षक कौन रहा है। अगर मोदी इस बात को नहीं समझता तो मैं तो इसका इलाज नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री का स्टैंडर्ड होना चाहिए। चेले ऐसे इकट्ठे करें, गाली के बिना बात नहीं करते, करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे देश को तब फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेज पीटा तो इसको, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को पीटा तब फर्क नहीं पड़ा। बर्फ के सिल्लों पर लटाते थे, डंडे मारते थे, तब फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो पैदा हुई नहीं अभी। अरे बाहर के लोग पीट के गए, जिनको हमने मेहमान बनाया था। अतिथि देवो भवे, अतिथि ऐसे देवो भवे, तो वो देव जम गए, गए नहीं। देवो भवे, ऐसा देव हमें नहीं चाहिए। आप क्या हो? इसलिए अंडरस्टैंड दिस नेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सोसाइटी, try to realize what degree of people we here are, what level of people we are. We are people very much God-fearing. God-fearing people, honest people we should be. Hard-working people should be. We have to seek all this. We have to check all this. Otherwise, there's no Bharat. There's no Bharat. It is only 7 decades since we got independence, and we have changed a lot. I don't know where we are moving to, what this government wants. Maybe this government is also not clear. They have deception of something. They cannot do it. They have deception to change this constitution. They have deception to change the name of this country, to change style of this country, to change structure of this country, to change population of this country. That cannot be happening. That can never happen, and that shall not happen. Dreams are very beautiful. Mountains are very beautiful, see how far distant. Dreams are very beautiful, but dreams rarely come true. Dream something which is good, better. I'm not all time happy to criticize someone, but there's something in my heart, in my mind, that I'm trying to expel, trying to erupt this volcano from my heart and mind, and converting it to flower and give to you flower in the form of knowledge, communication of information, dissemination of what we know, what we not know, referring to various provisions in our constitution and law, and of course many other issues known or unknown to each other.
Population and public of Bharat is united, should remain united, irrespective of political differences. Yes, there are people who are leaders pro. Congratulations to them to be leaders pro, but try to be national pro, nations pro. Don't think some leader is nation. Indira Gandhi did this mistake, she suffered, and this man shall also suffer. Shall also suffer. Because he is not thinking of people or nation, he is thinking of personal image. And person who thinks of personal image can never be a good leader, can be a destroyer only. Very easy to lament someone, something. Students, youth of this country, you are doing good indeed, but do not explode yourself. Do not cause violence in this country. If you did that, that's wrong. And if you did not do that, that's very good. What police does, let police do. Police is servant of government. They need promotion. Officers need promotion. They need facilities. They want to avoid transfers. So many reasons are there that police is causing damage to people. Let them cause damage. Let them send notices. Let them send what they want to send. There is a limit of everything. And that limit shall stop them as well. Time, you see, nothing remains permanent, Everything has to change. Everything has certain life. And this nonsense also has some life. But remember, your rising on a question shall be remembered for decades. It shall be remembered for decades. Because you are injection of this all. You are treatment of this all. Government never scared itself from what people thought, but when students erupted, government has shaken. They are not saying what fact is that government is scared of this revolutionary work the people are doing. Yes, you detain and send to jails. How long and how many? When, there's a saying, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते, ऐसा कुछ saying. So it's happening. Modi never thought, he never ever might have thought that this time something would happen opposing this man. You may bring opposition also, no problem. You may bring professors and others who support your move. It will not cause any difference. Because that is false design. Those who are struggling, they are true people. No student killed people. No student broke anything. It is foreign element. It's impurity in revolution that inflicted in by your people. That is a fact. But I'm not arguing on that. My argument on something else. My argument is you have done some error. You have caused some error in your approach. Correct that. Correct that one. This revolution is nothing but NCR, non-compliance report. Non-compliance report to institution of management, to Constitution of India of this country. You have caused an error. You have indented it. You have caused some teeth impact on this. Sooner is better. You remedy it and resubmit it for approval, or as long as public suffer, it shall be problem for yourself. You may hide whatever you want to hide. You cannot hide everything. You can hide whatever you want. You cannot do everything. People will not accept what you are saying. 80% population is not supporting your move. Remember,
Only those peoples in your group, BJP group, so-called Hindu group, Brahmins, and many others, or some OBCs, probably. OBC is a division, right? SC, ST, Muslim, Sikh, all without you. They don't need you. They don't accept what you have caused. That is an error. And this error has to be rectified. If it's not rectified yourself, then this error shall rectify you forever. A person is great if this person withdraws once in a lifetime, so that problem is deleted, problem is removed. It's chance for you, it's luck for you, it's an opportunity for you to do it, or people would do it. Option is yours. You do it or people do it. If you cannot decide, I would say you are child. You're infant. You're not serious. A nation cannot be allowed to be operated by a child who has no license. Understand that? Nation cannot be allowed to be driven by a kid that you are trying. बहुत दूर नहीं चले हैं, अभी चलना बाकी है. चलना अब तो शुरू हुआ है. ठंडा मौसम जरूर है कहीं कहीं, लेकिन गर्मी भी है. आत्माएं जाग रही हैं, भावनाएं जाग रही हैं, व्यक्तिगत जाग रहा है, किताबें पढ़ी जा रही हैं, एग्जाम चल रहे हैं, संविधान बोल रहा है, चीख रहा है कि मुझे जलाया जा रहा है, मुझे बचाइए. संविधान के अंदर जितने भी 140 करोड़ आत्माएं बोल रही हैं, हम ये सब नहीं सहना चाहते, हम अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहते, वो हमारे मुस्लिम भाई हों या कोई और भाई हों, हम उनके साथ रहना चाहते हैं. हम अलग नहीं रह सकते, क्योंकि इस देश को आजाद हमने मिलके कराया है. हम उन्हें अब नहीं कह सकते कि आप इस देश को छोड़ के चले जाओ. ये संभव ही नहीं है. जो ऐसा सोचेगा उसका समझ लीजिए अंतिम टाइम किसी ना किसी रूप में आ रहा है. और जो नहीं समझता उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको, आपके ऊपर जो हम कह रहे हैं, जो कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अबे उत्थानाम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् प्रारित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए आपके ऊपर या नहीं करना चाहिए, फैसला आपको करना है. कृष्ण राम तो नहीं आने वाले, लोग जरूर कृष्ण राम बन जाएंगे. तो धर्मस्य का क्या होगा? ग्लानिर्भवति भारत है, प्रारित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम. याद रख दीजिए, आप विनाशाय दुष्कृताम में कौन है पता लग जाएगा. अब इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं रहती, मैं समझता हूं. आपने जरूर महाभारत देखी होगी, नहीं देखी होगी तो याद तो होगी, कुछ तो सुना होगा, या किसी पंडित ने आपको बताया तो होगा कि ये होता है. या नहीं सुना आपने तो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे आपको समझा देंगे, आपके पड़ोसी आपको समझा देंगे, और आपको समझ आएगा, रिश्तेदार को समझा देगा. कहने को मजाक नहीं है, ये सच्चाई है. हम गायत्री मंत्र भी बोल देते हैं और भी कुछ बोल देते हैं, उनका फायदा क्या है यदि आप उनको लाइफ से नहीं उतारते.
खाली चीजें भूलने की नहीं होती है। वो कृष्ण कह गया समझा गया, राम कह गया समझा गया, समझिए उसका मतलब ये नहीं था कि वो आएगा हर बात पे, वो किसी के थ्रू भी आएगा। हो सकता है बैठा हो, मेरे अंदर बैठा हो या किसी और के अंदर बैठा हो, आपको क्या मालूम है। जब लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो फोर्स होती है जो आते हैं। कोई जानता नहीं पहले से किसी को, लेकिन आ जाते हैं सड़कों पे और शुरू हो जाते हैं अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जब प्रदर्शन चल रहा है तो कोई ना कोई लिंक तो है उसमें, नहीं तो कैसे आते वहां पे। एक ऐसा काम हो गया जिससे उनको आना पड़ा, और उसके उत्तरदायी कौन है आप अच्छी तरह समझते हैं, हम नहीं है, हम नहीं है उसके उत्तरदायी। इसलिए मेरा सबसे देश के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से कहना है कि थोड़ा राजनीति के मुंह से बाहर आइए। ये राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है, क्यों गंदा करते हैं अपने आप को वहां रख के। राजनीति को भूल जाइए थोड़ी दिन के लिए, और जो भी आप कर सकते हैं उस पर करिए। राजनीति हमें कहीं नहीं ले जाएगी भ्रम जाल के अलावा। हमें को चलना है इकोनॉमी को, हमें चलना है व्यवस्था पे, हमें चलना है नागरिकता पे, और हमें चलना है देश के लिए। जो भी हो रहा है, वैसे तो कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा करता है, लेकिन हर बात के दोनों तरफ होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि उधर क्या हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, लेकिन सब होता है वैसा ही जैसा दिखता है। दिस इज माई कंट्री, सिंपल। I have to protect this country, simple, essence of this country. This is my principle. I can stay anywhere in world, but my mind, my conscience, my soul is my country, is with my country. Very simple. Because I was born here, I got educated here, I didn't dream full. अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोग देश के दुश्मन मत बनिए, देश के साथी बनिए। हम भारत के लोग बनिए। हम भारत के लोग जो कहते हैं पूर्णता से ये हाँ ये होना चाहिए, well, I just want to discuss something else today, but I just to stick to this because what's happening in this country is very unacceptable. What's happening in UP, there's no rule in UP. They're acting like as anti-social elements. Police acting as anti-social elements. What's happening in government of age, what's happening in government is very extraordinary. Government is doing something else. What we have to do? Should we stick to ourselves or should we stick to the nation? Nation is important or we are important. Public is important. Both are important. But public has to think again. Public has to think again. My friends, it's not too late anyhow. So I think you may be sleeping. Sleep, no problem. But don't sleep permanently. You're sleeping, you're tired. Of course you're tired. Of course I am tired too, but I when I see something, I do. It may be Sunday or maybe any day. Whatever is in mind, sometime I want you to bring to you people to contemplate on that, to deliberate on that. Maybe I'm wrong, I don't know, or maybe I'm right, I don't know. You people have to decide yourself for this future.
And some people are just arguing for sake of arguing. You have to take care of this country in future. This country is looking at you. Constitution is looking at you, young people. This constitution says that we all are responsible, and our forefathers are responsible, and all wealth are responsible for people of this country. If you save this country from current political attack, because I'm afraid this country is under attack. It's under attack on religion ground, only on religion ground. That value of constitution is far away. You have to read Constitution of Bharat, Bharat ka Samvidhan padhiye, read preambles, read articles, and read some statutes also. Read Article 74, read Article 1, and read Article 140 and all that, and 74 and 81. At least you read them. Try yourself and don't take nation for granted. Your nation is important for you and for me also. My father, my grandfather, and grandfather worked for this nation, survived. We are brave people of this nation. If you keep alive, if you keep thinking for this nation, if you don't sleep, if you raise questions, if you don't get answer, you force them answer. You have to be brother to all, brothers and sisters to all. And you are doing good that you are not caring for religion. It's very example, good example. You are really Bharatvasi, you are really Bharat Desh ke Nagrik. These people who are in power always conduct to have differences with them. But it is not secure one. Constitution guarantees something that's secure to citizens. It says in just after one para, control of citizens, custodial, custodian, educational, देश को जलाना नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है. We have to take this country to scientific development. We have to open chances for jobs. We have to open educational fields. We have to see people study technical, non-technical, bureaucracy, engineering. Means we cannot simply sit and sleep. We have to produce sciences. We have to produce science people. We have to produce technicians. We have to produce qualified people who can take responsibility. Such people we are looking for. We are thinking nation to be like this, but something else is happening. Some people do not like people to rise, to progress. I don't know their problem. They think only they should enjoy.
No, everybody has to enjoy. Public has to enjoy. It's public as collective body that pay taxes. Everywhere tax is paid. Even for a small item, tax is paid. For cleaning your area, tax is paid. You pay house tax, you pay water tax, you pay electricity tax, you pay municipal tax, you pay fuel tax. See electrical bill, how many taxes you are paying? Have you ever seen? Municipal tax, fuel tax, surcharge, electrical bill, this tax, that tax, and late fee bill tax. Late fee tax. Similarly, in the house tax you have to pay. WC you are using, you have to pay tax for that. You have to tax for when you cross your when you pass through toll gate. You have to pay tax. When you buy biscuit, you have to pay tax. When you buy material, you go to hotel, you have to pay tax. When you buy something, you have to pay tax. Your income tax you are paying, wealth tax you are paying. How many taxes you are paying? For what? If you are not getting service back, what's the new tax? Have you ever contemplated this? We must get back our tax money. If government works like this, wasting our tax, going to some country and paying this much, paying this much, paying this, who is he? If I have to take extra money for somebody to take my garbage from home, and I have to pay municipal tax also, what's the meaning of that? Why dual taxation? Who will solve that? Who will solve this? What for government is there? What purpose of government? Just to create problems for people? We have to consider all these points. This we have to consider. It's not joke. It must be considered. It must happen this way. We cannot simply run away. We cannot run away from this. We have to think this way. We cannot avoid this. फिर मैं कह रहा हूं जाता जाता इस वीडियो से, अच्छा कर रहे हैं आप, आंदोलन कर रहे हैं, आप देश से सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपके इस एक्शन से शांत नहीं है, चलते रहिए आगे। सरकार के सामने हमेशा कोई खड़ा होना चाहिए बात करने के लिए। सरकार तभी सही काम करती है, नहीं तो सरकार समझती है कोई नहीं पूछने वाला उसे, जो मर्जी करें हम, जो मर्जी करें हम, नहीं चलेगा। जो पब्लिक चाहेगी वो चलेगा। नौकर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, जो स्वामी कहेगा वो करना पड़ेगा। और जनता स्वामी होती है, याद रख लेना। पार्लियामेंट से ऊपर पार्लियामेंट होती है जनता, न्यायालय से ऊपर न्याय होती है जनता। जब जनता न्याय करती है वो अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, इंदिरा जैसे गिर गई थी, याद रख लेना। कांग्रेस को लाके फेंक दिया, इनको लाए कि कुछ करेंगे, पर ये तो उनके भी बाप निकले। लूट लिया कंपनियों को, बेच दिया, खा गए बेच के। 50 साल लगे कंपनियां बनाने में, ये बेच रहे हैं। एजुकेशन को खरीद लो इनके हिसाब से, बेच रहे हैं। इसके लिए इनको लाए थे। पटरी मेरी, प्लेटफॉर्म मेरा, इलेक्ट्रिक सिस्टम मेरा, ट्रेन इनके दोस्तों की चलेगी, ये करने के लिए लाए थे इनको। चीफ मिनिस्टर को इसलिए बैठाया जाता है कि लोगों के घरों में घुस के गोलियां मार दो, सामान लूट लो और पुलिस देखती रहे, पुलिस ही करे काम। ये कौन सा समाज बना दिया हमने, कौन सा देश बना दिया हमने। और ये देख रहे हैं बैठ के ऊपर, प्रधानमंत्री बैठ के देख रहे, मन की बात, ये बात। और न्यायालय, कॉफी नहीं है, चाय नहीं है, मैं सो रहा हूं, जो करना है कर लो, जब तक मैं जागता नहीं। ये न्यायालय का हाल हो गया है। कहाँ जाए कोई? आप सोचिए, बताइए, तब तक मैं चलता हूं। आपसे बाद में बात करूंगा। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो भी ऐड करना है कर लीजिए। धन्यवाद आपके समय का। चलते हैं अब हम भी।